right? So whenever we're going to be talking about apoptosis is what is going to be having an important finding that there is going to be a shrinkage of the cell. And this is going to be characterized by the fact that there is a nuclear condensation and there is a presence of apoptotic body. So A would go with 3. There is no doubt to it. Whenever we're going to be talking about pyroptosis is going to be characterized by the bacterial inflammation, formation of inflammasome, formation of interleukin-1, and of course, there is a role of caspases 1, 4, 5, 11. So this is going to be cellular swelling, and so this would be going, pyroptosis is going to be going a cellular swelling, membrane rupture, and this B2. If I'm talking about C, this is necroptosis. Necroptosis is going to be characterized by the fact that there is going to be a combination of necrosis and apoptosis. However, caspase is not involved. So this is what is going to be associated with the fact that the patients are going to be having a increase in the size of the cell. There is a damage to the plasma membrane. This is what is going to be similar to necrosis. And there is going to be a presence of inflammation as well. So C would be going with 4. And if I'm talking about autophagy, which was given as an INA question separately to you as well, you're going to be having formation of a double layer of membrane of autophagosome, and there is a presence of cytoplasmic equalization. So this is what is going to be D is going to be 1. So the answer for the question becomes obviously clear. This is going to be option B. That's what you need to remember over here. So one question is helping us understand about 4 questions which have been asked in the exam directly or indirectly. Of course, we are aware of the role that is being played by glutathione peroxidase, which is going to be important in context of ferroptosis. We are aware of the role played by caspases. 3, 6, 7 is executional caspases. Caspase 8 and 10, which is an example of caspase involved in the extrinsic pathway of apoptosis, and caspase 9, which is involved in the intrinsic pathway, right? So those are the things that we just need to remember over here from the perspective of the exam. Talking about the next one, 32-year-old man presenting with a slowly enlarging painless cervical lymph node. The excisional biopsy, he has no fever, night sweats, or weight loss. Excisional biopsy of the lymph node shows nodular architecture with scattered image. And what the question is making a mention of is the presence of these kind of cells which are going to be having CD20 positivity, CD30 and 15 negative, surrounded by small lymphocytes. Flow cytometry reveals monoclonal B cell proliferation, which of the following is the most likely histological finding. So when we are talking about 15 and 30 being negative, 20 being positive, obviously this is an example of a non-classical Hodgkin's lymphoma. And the moment we're thinking in terms of a non-classical Hodgkin lymphoma, what will come to our mind is going to be small B cells surrounding popcorn cells in a nodular pattern. So nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma is what we would remember over here. Now, as rightly asked by somebody, why is the answer not as option A over here? This is multilobulated Reed-Sternberg cell, which is going to be seen in a patient who's going to be having classical Hodgkin's lymphoma. Classical Hodgkin's lymphoma, which is going to be associated with the background of inflammatory cells, is what you see in a patient who's going to be having the presence of the typical Reed-Sternberg cells. Typical Reed-Sternberg cells का मतलब होता है CD15, CD30 positive cells, which are CD20 negative, right? So this is what is going to be seen in a patient who's going to be having the classical Reed-Sternberg cell. Whenever we're going to be talking about option C, तो ऑप्शन सी अगर हम बात करते हैं, so this is an example of anaplastic cells with horseshoe shaped nuclei. Option C is what is going to be seen in a patient who's going to be suffering from anaplastic large cell lymphoma, and this is an example of a lymphoma in which they are going to be having the presence of hallmark cells. Nodular pattern दोनों के अंदर होता है यार, that's a game. So इसका जो नाम होता है, it is called as nodular lymphocyte predominant Hodgkin's lymphoma, और दूसरा वाला जो nodular होता है इसका नाम होता है nodular sclerosis Hodgkin's lymphoma. Right, so lymphocyte predominant को nodular lymphocyte predominant भी बोलते हैं. Nodule is formed over there as well, right? And if I'm going to be talking about option D over here, proliferation of the centroblast and immunoblast with starry sky appearance, of course you are aware of the fact that this is what is going to be seen as a finding of a patient who's going to be suffering from starry sky. ने आपको hint दे दिया that this is what we are dealing with a patient who's going to be suffering from Burkitt's lymphoma, right? Whenever we are going to be talking about other example of tumors which are going to be having ALK positivity, ALK positivity is also going to be a feature of, apart from anaplastic large cell lymphoma, ALK positivity is a feature of adenocarcinoma of the lung. It can also be seen in case of neuroblastoma. It can also be seen in a patient, INI question, inflammatory myofibroblastic tumor. Inflammatory myofibroblastic tumor, absolutely. Dr. Orthodox, Dr. Meteor, you remember that. Over here, you're going to be having starry sky pattern. So this is going to be associated with translocation 814. The other translocations that can be present in the patients can be translocation 28 and translocation 822. That was INI question. We talked about chromosome 8 over here. Why is it important? Because it is having the presence of the nuclear transcription factor that is given the name of c-MYC. And it is because of the rapid proliferation of the tumor cells that you're going to be getting the pattern over here, which is given the name of the starry sky pattern. I hope you are able to recall this particular fact. What is going to be the bone marrow examination finding of these patients? Patients are going to be having cells. Cells are going to be having presence of vacuolated cytoplasm, and they are going to be having the royal blue color of cytoplasm. So vacuolated royal blue cytoplasm is what is going to be seen on the bone marrow examination of these patients. That is what you need to remember as additional facts over here, right?
Talking about the next one, a 35-year-old man presents with pain in his fingers, toes, ulcers in his fingertips, and claudication of the lower extremities. He is a heavy smoker, so age is important, and he's a heavy smoker. Examination reveals cold cyanotic jaundice with diminished pulses, which is the likely diagnosis. So, of course, you understand the fact that this history is matching in the patient who's going to be suffering from Berger's disease, right? Berger's disease. So, when we are going to be talking about a patient who's going to be suffering from Berger's disease, what you need to remember over here is that this condition is given the name of thromboangiitis obliterans. And whenever we are talking about a patient who's going to be having thromboangiitis obliterans, there is a thrombosis within the vessel wall because of inflammation. So the answer is so very clear. The patients are going to be having the presence of segmental thrombosis with vessel wall inflammation. There is going to be a sparing of the internal elastic lamina. Remember the fact fragmentation of the internal elastic lamina is going to be seen as a feature of giant cell arteritis. And the patients over here are going to be having a sparing of the internal elastic lamina over here. If I'm going to be talking about option A over here, what is the condition which is going to be associated with this one? Granulomatous inflammation with giant cells that can be seen in a patient who's going to be suffering from a condition like giant cell arteritis, as well as the patient suffering from Takayasu arteritis. Difference in the patients is going to be age of the patient. Giant cell arteritis is seen in patient who's having an age more than 50 years. Takayasu arteritis patient is having age less than 50 years. If I'm going to be talking about option B, transmural inflammation with fibrinode necrosis of the medium-sized arteries. This is a classical feature of a patient who is going to be suffering from the condition like polyarteritis nodosa. And when we are talking about this condition, it is going to be having an association in 30% of the patients with hepatitis B infection. So patients are going to be having the presence of hepatitis B surface antigen, because of which there is immune complex formation. So that's another important thing that we need to remember over here. And the moment we are thinking in terms of a post-immune necrotizing vasculitis with crescentic glomerulonephritis. Now that can be seen in a patient who's going to be having the presence of RPGN subtype 3. So that can be seen as a picture of a patient suffering from microscopic polyangiitis. That can also be seen in a patient who's going to be suffering from granulomatosis with polyangiitis. So necrotizing vasculitis with crescentic glomerulonephritis. So that is going to be a feature that we need to remember. Of course, the commonest vessel affected in a patient who's going to be having this kind of history happens to be the tibial artery. The classical clinical presentation of the patient is going to be intermittent claudication. And these patients are going to be having an improvement as and when they are going to be quitting their smoking. So that's the most important advice that is to be given for these patients, right? So that is what is going to take care of this question. Of course, needless to say, but the patient is going to be having the presence of a medium size inflammation of the vessels. Next one hopefully is going to be easy. 6-year-old boy with intellectual disability. The boy is having speech delay. He's having hyperactivity, and he is having long face, large ears, and large testes. So big time fact that you are having a male individual who's going to be having the presence of large ears, long face, and large testicular tissue. And the question talks about the features over here are going to be matching what is going to be given the name of Fragile X syndrome. The moment we're thinking in terms of Fragile X syndrome, we understand the fact congenitally giant gonads, right? That's a characteristic feature that we discussed earlier as well. So this is going to be a patient who's going to be suffering from the presence of these kind of trinucleotide repeats. That is the, yes, congenitally giant gonads. When I'm talking about keeping the animal in a cage, the hunter will do it. So this is a feature of Huntington's disease. When I'm going to be talking about a patient having alopecia, Christmas tree cataract, and there is going to be a presence of CTG repeats, this is going to be a feature of a patient who's going to be suffering from myotonic dystrophy, as rightly said, myotonic dystrophy. The moment we're thinking in terms of a patient who's going to be eating fried rice and having a singing and dancing attitude, so this is going to be going gaga over there. So that is going to be a feature of Friedreich's ataxia. Friedreich's ataxia. So these are the questions that you obviously need to remember. Of course, we discussed yesterday that these are example of trinucleotide repeats. Example of a condition where the patients are going to be having hexanucleotide repeats include ALS, amyotrophic lateral sclerosis. And the second condition that you need to remember is a patient who's going to be having the presence of frontotemporal dementia. Frontotemporal dementia, that's what is going to be given the name of Pick's disease, right? Next one, 16-year-old girl with easy bruising is going to be having prolonged bleeding after dental extraction, maybe menstrual periods. She is going to be having the presence of a platelet count that is normal. The PT is normal. APTT is prolonged. Ristostatin cofactor expression is going to be decreased. So this is what is going to be seen in a patient who's going to be having the presence of the von Willebrand factor. That is what it seems to be. And therefore, what we need to remember over here is that this is going to be dependent with an association with something like a female. So this is what is going to be seen as a feature of a patient who's going to be suffering from a condition like the deficiency or dysfunction of the von Willebrand factor, which is going to be associated with impairing of the factor VIII stabilization, right? So VWF problem, VWF, von Willebrand factor, which is going to be seen as a trouble in a patient who's going to be having a problem at the level of the endothelial cells. Endothelial cells are normally having the presence of Weber-Pallard body, and that is what is going to be causing the trouble over here. Now, why are the other options not as an answer? What we are finding over here is
that decreased cleavage of von Willebrand factor by ADAMTS, this is going to be seen as a feature of a patient suffering from TTP, thrombotic thrombocytopenic purpura. Of course, you know the fact it is a very important reason for development of microangiopathic hemolytic anemia. TTP is a cause of microangiopathic hemolytic anemia. TTP के patients के अंदर the characteristic feature that you are going to be having over here, PT को prolong होगा BWD में अमन, APTT prolong होता है ना भाई. When you are talking about TTP, patients are going to be having neurological dysfunction, they are going to be having fever, they are having renal dysfunction, they are going to be having MAHA, and they are having thrombocytopenia, right? So pentard is what is present over here. Whenever we are going to be talking about a patient who's going to be having impaired platelet aggregation due to defect in GP1 problem. GP1B problem is going to be seen in a patient who's going to be having giant platelets. That's given the name of a condition which is going to be called as Bernard-Soulier. So this is what is going to be seen in a patient who's going to be having Bernard-Soulier, right? Bernard-Soulier syndrome. That's what we need to keep in mind. A question which is going to be talking about autoantibodies against factor VIII causing secondary. This is going to be a feature of acquired hemophilia. This is going to be a feature of factor inhibitors. That's going to be a feature of acquired hemophilia. And these are the patients who are going to be having an issue because they are going to be having antibody formation against factor VIII. Antibody formation against factor VIII. So that is what we discussed, that for distinguishing between the patient who's going to be having hemophilia A, which is an example of an X-linked recessive condition, and a patient who's going to be having acquired hemophilia, the differentiation can be done on the basis of mixing studies. Mixing studies. That is what you need to remember over here, right? तो दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर. तो बर्नार्ड सोलियर मैंने बोला ही नहीं अक्षित, आप क्वेश्चन ध्यान से देखो, आप ऑप्शन है, आप आंसर यहाँ पे सी है. क्यों बाकी ऑप्शंस नहीं है उसका एक्सप्लेनेशन चल रहा है मेरे भाई, राइट? तो ये हमें चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है. ऑफ कोर्स व्हिच कंपोनेंट ऑफ ब्लड वुड बी गिवन टू दीस पेशेंट्स सो एज टू ट्रीट देम. द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट इज गोइंग टू बी हेल्पिंग इन दीस पेशेंट हैपेंस टू बी क्रायोप्रेसिपिटेट. Remember the temperature at which cryoprecipitate is going to be stored. Cryoprecipitate is going to be stored at a temperature of -18 to -30 degrees Celsius. And what we are going to be remembering over here is that this is going to be an example of a cryoprecipitate which is going to be having a shelf life of around 1 year. That's another thing that we need to remember. ठीक. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये वाली चीज ध्यान रखनी है. ये मॉडिफाइड क्वेश्चन था जो आपके आईएनआई के अंदर ऑलरेडी पूछा गया था, राइट? टॉकिंग देन अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. 35-year-old man, he receives a packed RBC transfusion for severe anemia, and within 5 minutes he is going to be having a development of fever, hypotension, dyspnea, hemoglobinuria, and DIC. Which of the following is the most likely mechanism responsible for causing this reaction? Now we are going to be having a situation where the patient is going to be having fever, so febrile reaction to hai hi hai. But the patient is also having a falling of BP, he is also having difficulty in breathing, and he is having hemoglobinuria. Now presence of hemoglobinuria means that there is hemolysis which is taking place. So it is an example of an acute hemolytic reaction. And why hemolytic reaction takes place is because you are having the cross-reacting antibodies. So this is going to be seen because of presence of IgM-mediated hemolysis against the donor RBC antigens. Right? So this is a classical case of ABO incompatibility. When it is very severe, patients can go into DIC as well. Usually in real life, the moment the patient is going to be having a development of fever with chills and rigors, or the patient is having a loin pain, or the patient is going to be having a development of a backache, you stop the transfusion. But in case it happens to be severe, then the patients can be having a development of DIC. Now, why are the other options not the answer? That's very important in case you made that as a mistake in the exam. Cytokines coming from the stored leukocytes in the transfused blood. What is that going to be responsible? That is responsible for causing the development of fever. That is responsible. IgG क्यों नहीं है, IgM क्यों है? Because natural antibodies जो ABO antibodies होती हैं वो IgM होती है. डॉक्टर साहब बेसिक फिजियोलॉजी का फैक्ट है. साइटोकाइंस जो होते हैं, this is what is going to be responsible for causing development of fever, right? How would we reduce the development of fever over here in this kind of a condition? Is because of a simple thing that the patients are going to be given what is going to be given the name of leukodepleted blood. What is going to be seen as a feature of Ig-mediated hypersensitivity leading to mast cell degranulation? This is what is going to be responsible for causing allergic reactions. Allergic reactions को decrease करने का तरीका क्या होता है? That you are going to be using the presence of saline washed RBCs. Saline washed RBCs, right? Of course, you are aware of the fact that what is going to be the size of the transfusion needle that you are using, 170 to 200 microns. 170 to 200 microns. What is going to be the size of the filter that we are going to be using is 170 to 200 microns, and the size of the needle, the gauge needle, is 18 to 19 gauge. 18 to 19 gauge. What you need to remember over here also is a fact is that whenever you're going to be starting with blood transfusion, the blood transfusion is going to be done within 4 hours. Within 4 hours, the transfusion has to finish. Within 4 hours, the transfusion has to finish. That is what you need to keep in mind. And this has to be started usually within 30 minutes of taking the blood out of the blood bank, right? So the only thing that you have to take care of is that this should not be causing any temperature discomfort to the patient. So this blood has to be rewarmed. You can be using inline warmers, or you can be putting the blood bag on the body of the, the attendants. And that is what is going to take care of the issue. The temperature at which the blood is going to be stored, I want you to answer that question. Temperature at which whole blood is stored.
द फीवर जो होगा फर्स्ट वाले केस के अंदर वो नॉन हेमोलिटिक होता है ना डॉक्टर साहब, फिब्राइल नॉन हेमोलिटिक, मैंने एफ लिखा लेकिन आप पूरी बात सुनो। फिब्राइल नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे रखते हो आप इसको। शेल्फ लाइफ कितनी होती है इसकी? 42 days होती है। व्हाट इज द केमिकल दैट इज बीइंग एडेड? Chemical that is being added over here is going to be sagam. What is the purpose of having the presence of adenine over here? Adenine provides ATP. What is the purpose of having the citrate over here? Citrate is responsible for decreasing the chances of, it is going to decrease the calcium, so it is going to decrease the chances of, it is going to chelate calcium, so it is going to decrease the chances of clot formation. Last one is what is easy, engraftment of the donor lymphocytes attacking the host. This is what is going to be seen in a patient who is going to be having transfusion associated graft versus host disease. Transfusion associated graft versus host disease. Again and again, another INA question: how do we prevent the chances of transfusion associated graft versus host disease? By irradiating the blood. So leukodepletion is responsible for decreasing the chances of fever, but irradiation of the blood is responsible for decreasing the chances of GVHD, right? So these are the important things that you just need to keep in mind for cracking the questions in the exam. Not a very difficult question, but the only thing was that whether you were able to read the fever component and whether you applied your mind that the patient is also having the presence of hemoglobinuria, that's an important thing, right? Next one that we need to remember over here is 28-year-old woman admitted for severe postpartum hemorrhage requires emergency blood transfusion. Cross matching shows incompatibility with O negative donors as well. So if we are going to be talking about, if we are going to be, हाँ GVHD तो यार WBC कराएंगे ना यार, immunocompetent T cells करते हैं ना, T cells are a type of WBC, right? When we are talking about saline wash करते हैं एलर्जिक रिएक्शन को कम करने के लिए, एलर्जिक रिएक्शन को कम करने के लिए. So when we are talking about O negative donor products, then this is what is going to be associated with the presence of a blood group which is going to be given the name of rarest blood group, and that is what is going to be called as Bombay blood group. Bombay blood group which is being represented as 2 small h, that is what we made a mention of. Right? So O negative RBC तो आप दे ही नहीं सकते, इससे तो क्रॉस रिएक्शन हो रहा है. O negative से रिएक्शन हो रहा है, so you cannot even give AB positive. Now some of the intelligent people will think that we should be giving an autologous donation. अभी ऑटोलोगस डोनेशन आप इसमें क्या कर सकते हो? आपके पेशेंट का ऑलरेडी रिएक्शन हो चुका है, राइट? आपको उसके बाद ही तो पता चलेगा कि इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप है. माय पॉइंट इज, आपने क्रॉस मैचिंग में देखा कि ओ नेगेटिव डोनर है, उसके बाद ही तो पता चलेगा कि आपको बॉम्बे ब्लड ग्रुप है. तो आप उसका ब्लड पहले कैसे ले लोगे? ऑटोलोगस डोनेशन का सिंपल रूल होता है, जैसे आपने वो जेनोवास विटनेस की कहानी सुनी है. देयर इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल who are going to be giving the blood well in advance if they have to undergo surgery, right? That blood is stored, and once they are going to be having the surgery, then they are going to be utilizing their own blood, so they do not accept blood from any outsider, right? So the point is that autologous donation would be good, but this is going to be a, I would say, a post facto thing that you are thinking as of now. So this is going to be an ideal thing, but then it is not going to be involved over here because you have made a diagnosis of Bombay blood group later on. So what the only thing that you have is that once there is a cross matching which is telling you that O negative also is not compatible, O negative is not compatible, then this is what is going to be associated with the presence of Bombay blood group. Right? So that is ideal answer over here. That's an ideal answer over here, right? Talking then about the fact that medical student is performing blood drawn for routine lab work and mistakenly collects the blood CBC in a sample in which there is a gray top instead of a lavender color top. So that's a very common mistake that is going to be done by, usually the interns as well, first timers, when they do not have any idea about the vacuum thinner. So the question is asking you what is going to be the problem over here. Even the gray top is going to be having potassium oxalate. Gray top के अंदर भी तो potassium oxalate present है ना, तो पोटेशियम ऑक्सलेट से प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे, राइट? लेवेंडर कलर वाला ट्यूब आपको लेना चाहिए था बिकॉज आपको सीबीसी करना है, बट आपने पोटेशियम ऑक्सलेट वाला ले लिया. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम ओवर हियर? द प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू बी फाइंडिंग इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज दैट you are going to be having the presence of a situation that this is going to be associated with potassium. And once you are going to be talking about the CBC, then there is going to be a problem with respect to the higher amount of potassium which is going to be responsible for causing hyperkalemia. Higher amount of potassium which is going to be responsible for causing hyperkalemia. देखो क्लॉट फॉर्मेशन तो नहीं होगा, क्लॉट फॉर्मेशन तो नहीं होगा बिकॉज एंटीकोगुलेंट है, तो ये कैनॉट, दिस कैनॉट बी द आंसर. Inhibition of glycolysis leading to falsely low glucose level is also going to be false. This cannot be the answer because आपने डाल दिया उसको ग्रे टॉप के अंदर. ग्रे टॉप ट्यूब के अंदर you are going to be having sodium fluoride. Sodium fluoride is going to inhibit enolase and that is going to be giving you a correct value of blood glucose, so that cannot be a problem. So the problem that we are going to be having over here is that there is going to be extra potassium and that is what is going to be responsible for causing hemolysis. That is what is going to be responsible for causing hemolysis. That is what you need to remember over here, right? What is the tube that is going to be taken for so far as PT and APTT is concerned? The tube that is going to be useful for estimation of PT and APTT is going to be the blue color tube, that is going to be the trisodium citrate, right? Which particular tube is going to be having the presence of clot activator? What is the color of the vacuum thinner? Which particular vacuum thinner is going to be having clot activator? The red one. That is for serum studies. Which one is going to be having heparin? Which one is for heparin? Heparin one is going to be the green one.
Heparin 1 is going to be the green one. So that is the important thing that we just need to have an idea over here. Heparin is the one which is going to be having an idea over here, right? So with respect to a wrong kind of a tube, that is what you need to remember. This is what is going to be giving you a wrong reading. This is what is going to be giving or associated with hyperkalemia. Patient is not having hyperkalemia, but this is what is going to be responsible for causing pseudo hyperkalemia in the patient, and that can be giving you a wrong thing, right? Next one is 65-year-old patient with CLL is having a presentation in the form of fatigue and jaundice. Laboratory shows HB is 8.2. Reticulocyte count is elevated. Bilirubin is indirect hyperbilirubinemia. LDH is elevated and direct Coombs test positive. So patient is having hemoglobin of 8.2. That means patient is going to be having 8.2. This is what is going to be having the presence of. No, it is not going to be affecting as effectively as citrate would. It is not going to be effective as effective like citrate. The only thing is that this is going to be obviously chelating the calcium. Potassium oxalate चेलेट तो करेगा, पोटेशियम फ्री हो जाएगा ना. चेलेट कैल्शियम के साथ कर जाएगा, पोटेशियम फ्री हो जाएगा. पोटेशियम फ्री हो जाएगा तो एलिवेटेड लेवल्स दे देगा आपको, तो सूडो हाइपरकैलेमिया हो गया ना. सूडो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा ना आपको. दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. ईडीटी नहीं है उसके अंदर भाई. आपने तो ग्रे टॉप में डाल दिया ना. आपने ग्रे टॉप के अंदर डाल दिया तो इन कंपैरिजन टू ईडीटीए पोटेशियम की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी. ठीक है. इस पेशेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिला? यू हैव अ पेशेंट हु इज गोइंग टू बी हैविंग CLL. ही इज गोइंग टू बी हैविंग डिक्रीज हीमोग्लोबिन. ही इज हैविंग इंक्रीज concentration of unconjugated bilirubin. He is also having the presence of increased LDH. Now, increased LDH and the presence of increased unconjugated bilirubin and the presence of a direct Coombs test gives you a hint that we are dealing with a patient who is going to be having hemolytic anemia. Hemolytic anemia. So whenever we are going to be talking about hemolytic anemia, they are of two types, warm subtype and cold subtype. Which subtype of hemolytic anemia are we going to be having with CLL? That's an easy question. So we are going to be having the warm subtype. So it is going to be having an attachment with the RBCs at 37 degrees Celsius. And why is it important? Because RBCs are going to be covered with IgG antibody. So they will become tastier for the phagocytes and the splenic macrophages will attack them. So the answer for the question becomes easy. IgG mediated opsonization in the spleen. IgG mediated opsonization in the spleen. This similar mechanism is what is applicable in case of patients who are going to be having SLE and rheumatoid arthritis. Similar mechanism is applicable in case of drug-induced hemolytic anemia, in which the patients are having a history of intake of drugs like alpha-methyl dopa and penicillin. That is what is going to be causing the trouble. If I'm looking at option A, that's easy for most of you to talk about. CAD, cold agglutinin disease, mycoplasma infection, malignancies. Patients are going to be having the presence of mycoplasma infection, malignancies, or EBV infection. And they are the ones who are going to be having the presence of IgM antibodies. IgM is responsible for causing complement fixation. That is responsible for agglutination of the RBCs, the clumping of the RBCs that you're going to be seeing on the shaded slide. And that's responsible for acrocyanosis, right? Microangiopathic hemolytic anemia with RBC fragmentation can be seen in case of platelet fibrin thrombi. So it is going to be seen in case of big vessels whenever they are going to be having the presence of metallic cardiac valves. It is going to be seen in case of conditions like DIC, can be seen in patients suffering from HUS, can be seen in a patient suffering from TTP, can be seen in a patient suffering from malignant hypertension, can be seen in a patient suffering from scleroderma crisis. Right? That's what you need to remember. Indirect bilirubin matlab unconjugated bilirubin. Iska matlab hai the patients are going to be having the presence of hemolysis. Hemolysis. Right? Whenever we're going to be talking about MAC-mediated hemolysis means the patients are going to be having the activation of the complement system. So which condition would be having this? MAC-mediated hemolysis is going to be seen as a feature of excessive complement activation. That means a condition like PNH. This is going to be seen in a patient suffering from PNH. Complement system causing damage to RBCs, feature of PNH. How do we treat PNH? Eculizumab and ravulizumab. That's what we talked about earlier. What is a fundamental problem in a patient having PNH? There is a problem in a gene called as PIGA gene, PIGA, right? So these are the things that we just need to keep in mind. So not a difficult question. The only thing that is to be remembered over here is that in patients who are going to be having the presence of IgG antibodies, the site of destruction happens to be spleen mainly. In case you can remember, patients who are going to be having CAD, they are going to be having the chief site of destruction being the liver, right? If you can remember this, very good. Which condition is going to be having autoimmune hemolytic anemia? And the patient is going to be having the presence of biphasic antibodies. Biphasic antibodies. Name the condition. Patients are having biphasic antibodies on autoimmune hemolytic anemia. That is going to be paroxysmal cold hemoglobinuria. What is the name of the antibody in PCH? Donath-Landsteiner antibody. Donath-Landsteiner antibody. Right? So these are the important things. What is going to be the peripheral smear finding of this patient? Peripheral smear finding of this patient. So peripheral smear finding of a patient having autoimmune hemolytic anemia is going to be spherical RBCs. Spherocytes are going to be seen. Right? What is the peripheral smear finding of a patient having CLL? He is going to be having the presence of smudge cells. How do I confirm the diagnosis of CLL?
I confirm the diagnosis of CLL with the help of flow cytometry. What is the flow cytometry finding? CD5 positive, 23 negative. CD5 positive, 23 negative. That is what you need to remember. हाँ, गुम्परेट cells जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, right? What is going to be a cause of death in a patient having CLL? Cause of death in a patient having CLL? They are going to be having a death because of multiple attacks of infections, repeated attacks of infections. What is the anti-cancer drug given for treatment of CLL? Anti-cancer drug given for CLL, that is going to be a drug like fludarabine. ठीक. सो हाँ, 5 और 23 दोनों पॉजिटिव, 5 एंड 23 दोनों पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव 23 नेगेटिव इज अ फीचर ऑफ मेंटल सेल लिम्फोमा. ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट दिस वन, 67-year-old man presenting with fatigue. He is also going to be having presence of lymphadenopathy and splenomegaly. Biopsy reveals small lymphocytes surrounding the germinal center in the mantle zone distribution. 519 positive, 20 positive, but 23 negative. So 5 positive, 23 negative. Of course, mantle zone के अंदर है, तो mantle zone lymphoma. That is what is going to be associated with the translocation. That is going to be 11, 14. Of course, we are aware of the fact the patients are going to be having an overexpression of which particular marker over here. Patients are going to be having overexpression of cyclin D1. What is the role of cyclin D1 physiologically? What is the role of cyclin D1 in you and me? Normal. CD mat bolo yaar, cyclin D1 hai. Cyclin D1 physiologically is going to be responsible for the progression of cell cycle. In which phase of cell cycle is it going to be useful? So this is going to be responsible for the cell cycle, especially it is going to be in the transition of G1S phase. G1S phase, G1 to S phase. Cyclin D is the first cyclin that is going to be important in the progression in the cell cycle from the G1 to S phase. After cyclin D, the other cyclins which are going to get activated is cyclin D, A, and B. What is the cyclin dependent kinase which is going to be getting activated over here? This is going to be 6. The next one that we need to talk about over here is going to be, next one over here is going to be something like, 4, 6, 2, and 2. So we need to be familiar with 2, 2, and 1. That's what you need to remember. 4, 6, 2, 2, and 1. And the next one that we need to have an idea over here is going to be the fact the patients are going to be having another important condition in which they are going to be having the marker apart from cyclin D. So in a patient who's going to be having cyclin D negativity, the other marker that we need to keep in mind is going to be SOX11. The next question that we need to ask, remember in the exam, is going to be what is the condition where we are going to be having SOX10? SOX10 is a marker that is seen in case of a skin tumor, which is given the name of melanoma. Melanoma. 1418 is what is going to be seen in a patient who's going to be suffering from follicular lymphoma. Follicular lymphoma is characterized by BCL2 overexpression. BCL2 overexpression. 814 is what is seen in case of Burkitt's, that is known to you. 922 is seen in a patient suffering from CML. Read the question carefully. 822 is Burkitt's. 922 is going to be CML. So don't make a mistake in the question. That is what you need to keep in mind over here, right? That will take care of the questions. Next one. The next one that we talk about over here is a 4-year-old boy who's going to be having the presence of recurrent infections. And this patient is going to be having the infection caused by particularly Staph aureus and Streptococcus pneumoniae. The question is then asking you about the having the presence of normal T cell function. So the patient is going to be having the presence of staph infection, boy, normal T cell function, decreased serum C3b levels. Flow cytometry shows defect in the complement receptor on the phagocytes. Which of the following is the best explanation for the problem that is going to be seen in these patients? So what it is going to be saying is serum C3b levels are going to be less. When serum C3b levels are going to be less, that means the complement protein is going to be less. What is the function of the complement protein? C3b is going to be required for the purpose of opsonization. Especially, it is going to be covering the capsulated or the covered bacteria, the bacteria which are going to be having a capsule around them. So the answer for the question, therefore, is going to be something like this. Now, why are the other options not the answer? I am just explaining that impaired formation of membrane attack complex is not going to be the answer, because this is what is going to be seen in even in patients who are going to be having the problem of complement proteins other than C3b. So C5, B, 6, 7, 8, 9, उनमें भी problem होगा. The important thing that you need to remember is if there is a problem in the formation of MAC, right? The patients are going to be having a high risk of infections by, as rightly said, Biswanath and Montgomery. You're going to be having infections caused by meningococcal infections. I mean, Neisseria infections होंगी ज़्यादा. Increased Neisseria infections as well as toxoplasma infection. Neisseria infection as well as toxoplasma infection. That is what you need to remember. Whenever we're going to be talking about antibody-mediated cell-mediated cytotoxicity, antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity is dependent upon IgG antibody. IgG. So certain cells like neutrophils, macrophages, NK cells, they are dependent upon IgG-coated cells for destruction. So that is called as ADCC. That is called as ADCC. Failure to activate NADPH oxidase in neutrophil is going to be a finding that is going to be seen in a patient who is going to be suffering from a condition that is given the name of CGD. That's going to be given the name of CGD. Doctor, in the pathway of for the formation of MAC, yes, you are having a role played by C3b. But the question is making a mention of over here, when we are having a direct option, you can be having two questions. You can be having questions which are given in the exam in which
two options appear correct to you, but you will choose the better option. This is an example of a single best correct answer question in the exam. So the question is making a mention of a problem at the level of reduced levels of C3b. It is also talking about a defect at the level of the complement receptor, right? So therefore, we are talking about specifically a reduction in C3b, and therefore C3b associated problem, that is opsonization, is 100% going to be affected. That's why we need to be familiar with this. ADCC is a mechanism which the books describe that you are going to be having IgG coated on the surface of the target antigen or the cell, and neutrophils, macrophages, and NK cells are going to be destroying that particular cell. So it is an antibody-dependent cellular cytotoxicity. It was said to be one of the mechanisms of type 2 hypersensitivity reaction. Nowadays, they say that we are not very sure how much is it contributing to, right? So this was the basis for giving this question in the exam. What is the commonest complement protein deficiency? नहीं, ये ब्रूटन्स नहीं है यार. ब्रूटन्स इज अदर प्रॉब्लम. ब्रूटन्स के अंदर तो एंटीबॉडी कम होती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन थोड़ी ना कम होता है, right? C2 is a problem that is going to be seen in the patients. When we are talking about severe pyogenic infections are going to be seen in patients having C3 deficiency. C3 deficiency. What is the problem in a patient who's going to be having C2 deficiency? Or for that matter, C1 deficiency? C1 or C2 deficiency is what is going to be responsible for development of autoimmune disorders. Autoimmune disorders. And which kind of autoimmune disorders are going to be seen in these patients? That is going to be associated with something like the systemic lupus erythematosus. Systemic lupus erythematosus. Right? Flow cytometry हम आज की डेट में कर देते हैं for the purpose of having a confirmation about the absence or presence of a particular molecule. तो इसका flow cytometry में यहाँ पे जरूरी था. वो आप में से कुछ लोगों ने कंफ्यूज कर लिया क्वेश्चन से, जहां पे हमने बात करी थी क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज की, क्योंकि क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज आल्सो इज गोइंग टू बी हैविंग द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स लाइक स्टैफ ऑरियस, और वहां पे फ्लो साइटोमेट्री का रोल होता है. वहां पे टी सेल्स नॉर्मल होते हैं, वहां पे न्यूट्रोफिल्स का डिसफंक्शनल प्रॉब्लम होती है, राइट? सो उसको आपने कंफ्यूज अगर कर लिया तो आपने आंसर डी टिक कर दिया होगा, उसके लिए दिया था. ठीक. Talking about the next one, Namli or Hazir, 20-year-old male having a presence of recurrent abscess due to staph aureus. This has flow cytometry showing DHR reduction, which is going to be showing you absence of fluorescence. And the question is asking about the best explanation for the underlying mechanism. So the underlying mechanism that we understand over here is that this is going to be a patient suffering from chronic granulomatous disease. And if you're going to be having a patient suffering from chronic granulomatous disease, of course, this is going to be associated with impaired production of superoxide radical by phagocytes. So this is chronic granulomatous disease. There is a problem at the level of respiratory burst. Problem at the level of respiratory burst means that there is decreased formation of superoxide, and because of which patients are not going to be having the formation of the free radicals required to destroy the bacteria, right? What is going to be the availability of option A? Option A is going to be seen as a feature of a patient who's going to be having condition called as myeloperoxidase defect. Myeloperoxidase defect. Whenever I'm going to be talking about hypochlorous radical is important because this is what is going to be important for destroying the bacteria. It's a powerful halogenated molecule which is going to be responsible for causing the trouble over here. ठीक है. फिर we are talking about MPO enzyme deficiency. So A और C तो जो होगा वो myeloperoxidase की प्रॉब्लम होगी. Myeloperoxidase की प्रॉब्लम, right? When we are talking about ineffective lysosome fusion with phagosome, this is going to be a feature of Shirde-Higashi syndrome. This is a feature of Shirde-Higashi syndrome. So this will be a patient who's going to be having infections plus albinism plus bleeding plus neurological problem, right? These patients are going to be having a characteristic finding on the peripheral smear. What's a characteristic finding of a patient having Shirde-Higashi syndrome? Giant granules, coarse giant granules in the neutrophils. Coarse giant granules in the neutrophils are going to be seen as a finding of this patient. Coarse giant granules are going to be seen as a finding of a patient suffering from Shirde-Higashi syndrome, right? So those are the things that are coming to my mind as of now. Yes. If I'm talking about this condition, which of the following is an example of a screening test? Screening test that is being done for this patient happens to be what is given the name of nitroblue tetrazolium test. Nitroblue tetrazolium test. The confirmatory test, however, that we need to remember is flow cytometry. What kind of flow cytometry are we talking about over here? This is going to be dihydrorodamine. Dihydrorodamine. Where are we giving EMA flow cytometry? EMA flow cytometry is for hereditary spherocytosis. EMA flow cytometry is for hereditary spherocytosis. Flare flow cytometry is for PNH, right? So just read the question carefully. Do not get, overwhelmed by the fact that you know about a particular condition और क्वेश्चन ऐसा आ गया जो हमने पढ़ रखा है तो हम क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत कर दें. That should not happen. Next one. 2-year-old girl presents with persistent mucocutaneous candidiasis, autoimmune hypoparathyroidism, and adrenal insufficiency. Of course, you know the answer. This is autoimmune polyendocrinopathy syndrome 1. The patients are going to be having a mutation in which gene? AIRE. This was INI question. The first 3 lines and the defect in the gene AIRE gene. This was the INI question. Now, my question over here is that which of the following describes the role of this particular gene in the concept of immune tolerance? So, which particular process is going to be associated with the problem over here? We need to remember over here about the concept of the fact that if you're going to be talking about the
T cell apoptosis. Yes, it is responsible for causing T cell apoptosis, but not in the cortex, in the medulla. Not in the cortex, but in the medulla. So this is not the answer. I hope you did not make a mistake on this one, right? In case you made it, obviously you now know the answer. Thymic medulla ke andar, this is what is going to be causing the trouble. They regulate the presentation of peripheral self antigens in the thymus. Absolutely true. So their purpose is, this is what is going to be responsible for causing a negative selection. They bring self antigens from the periphery in the thymus. If the cells react with it, such cells are destroyed. Negative selection. Negative selection. भाई सेंट्रल टॉलरेंस का मैकेनिज्म है, एंटीजन बाहर से आ रहा है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा आपने. पेरिफेरल एंटीजन को लेके आया, लेकिन लेके कहां पे आया? थाइमस के अंदर. तो साइट जहां पे लेके आ रहा है, दैट इज थाइमस. वो तो सेंट्रल ऑर्गन हो गया ना. जो एंटीजन ला रहा है वो बाहर से ला रहा है. वो एंटीजन बाहर से आ रहे हैं, नॉट द अदर वे राउंड. ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना था आपने. promotes the clonal expansion of naive T cells is going to be a bad thing because that is what is not going to be seen. ये promote करता है clonal expansion of naive T cells को नहीं करता. This is going to be associated with T cell expansion. कहाँ पे होगा? T cell expansion होगा जब वहां पे आपके proliferation हो रहा है, and that is going to be the bone marrow, right? When we are talking about the facilitatory of facilitates regulatory T cell differentiation in the periphery, this is what is going to be important. ये कौन सा होता है जो T regulatory cells हो रहा है? T regulatory cells के लिए AIRE जीन नहीं होता. For T regulatory cells, the gene that is going to be involved is जो IPEX में involved होता है. IPEX में कौन सा जीन होता है? FOXP3. 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 Right? So the gene that is going to be involved over here in T regulatory cells is FOXP3, and the syndrome that you are talking about is IPEX syndrome. IPEX तो पता ही है आपको, immune dysfunction होता है, polyendocrinopathy होता है, X-linked होता है. Right? So AIRE gene का रोल क्या होता है? It is responsible for regulating the activity at the level of the thymus by bringing the self antigens in contact with the T cells, and if they are found to react with this, then this is going to be destroyed. Please remember the fact that T cells are going to be having the phenomena. T cells show the phenomena of both positive selection as well as negative selection. T cells show the phenomena of both positive selection as well as negative selection. तो बाहर वालों के साथ रिएक्ट कर रहा है, so these are required, so they will be positively selected. अपने वालों के साथ रिएक्ट कर रहा है, they will be destroyed. B cells are the ones which are only going to be showing the phenomena of negative selection. Self-reactive B cells are going to be destroyed. We do not have a concept of positive selection in case of B cells. So T cells के केस में पॉजिटिव सिलेक्शन होता है. इजी आपके लिए याद रखना, नेगेटिव सिलेक्शन तो दोनों में होता है. और जब भी आप पॉजिटिव को लिखोगे, जब भी आप अल्फाबेट टी को लिखोगे, टी को ऐसे लिखते हैं ना, टी इज रिटन एज दिस ना, तो टी के नाम में ही आ रहा है पॉजिटिव. पहले पॉजिटिव का साइन बना दिया, फिर नेगेटिव का साइन बना दिया, दोनों को जोड़ दिया, अल्फाबेट टी बन गया. तो टी के साथ में दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. ये वाली बहुत पॉइंट याद रखना. ठीक है. बी के केस में ओनली एंड ओनली नेगेटिव, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है. If there is going to be a self antigen coming in contact with a B cell, what is the mechanism by which central tolerance can take place? That mechanism is given the name of receptor editing. B cell receptor editing. That is what you need to remember. Positive and negative selection both are applicable for T cells, and negative selection is applicable for B cells. That is what I said. So in this patient, the patients are having AIRE gene problem. This is what is responsible for development of a condition called as APS1, autoimmune polyendocrinopathy syndrome. ठीक. Next one. 29-year-old woman presents with fatigue, joint pain, photosensitive rash. Hint मिल गया आपको, young female है, photosensitive rash है, joint pain है. She's having a recent history of a deep vein thrombosis. She's having prolonged APTT and thrombocytopenia, which does not get corrected with mixing studies. Now that's another example of a question that you need to keep in mind. So we are dealing with a patient most likely who's going to be having SLE. Patients having SLE who are going to be having DVT and are going to be having an increase in APTT might be suffering from a condition that is going to be given the name of, it is going to be given associated with APLA syndrome. APLA syndrome. APLA is also an example of a condition. APLA is also an example of a condition in which the patients are going to be having no improvement with mixing study. APLA is also an example of a condition in which the patients are not going to be having an improvement with the mixing study. So if I'm just talking about over here, this is going to be antiphospholipid antibody syndrome. What is the clinical presentation of this female? If she is in the age group and she is married, then she is going to be having development of fetuses, which are going to be small in size, fetal growth restriction, FGR, or she is going to be having repeated attacks of abortions, recurrent attacks of abortions. If I'm talking about something like the other options over here, factor 5 mutation, Leaden's mutation, of course, that is going to be responsible for causing hypercoagulability, but it is not going to be explaining the increase in APTT. It is not going to explain the increase in the APTT. So hypercoagulability तो है, एज भी मैच कर रही है फैक्टर 5 के साथ में, लेकिन the problem with the factor 5 mutation is it cannot explain the increase in the APTT, so therefore I can rule it out. Similarly, if I'm talking about deficiency of protein C and protein S, this can also explain hypercoagulability. This can also explain hypercoagulability, but you will not be able to explain the increase in APTT. There is only one thing which can explain the increase in APTT and the hypercoagulability, that is going to be a patient having APLA.
Now, why did we talk about the factor 5 over here? Factor 5 is being discussed over here because this is the most common inheritable cause of hypercoagulability. The risk of development of clot formation in these patients is increased by 5 to 50 times. 5 to 50 times. The mutation that is going to be seen in these patients is going to be arginine to glutamine mutation delta 506. Delta 508 is for cystic fibrosis, 506 is for Leiden mutation. Whenever I'm going to be talking about a condition like protein C, protein S deficiency, protein C, protein S are example of molecules which are going to be affected by a drug, which is a drug which is going to affect protein C and protein S, warfarin. That is why warfarin is responsible for causing a side effect which is called as dermal vascular necrosis. Dermal vascular necrosis, right? So these are example of anti-clotting proteins. Anti-clotting proteins, it is responsible for having an interaction with warfarin. So that's why warfarin is responsible for causing dermal vascular necrosis. And that's also the reason why warfarin is responsible for causing development of, as a lot of you are rightly recalling, purple toe syndrome. पर्पल टो सिंड्रोम. एपीडीटी बाकियों में इंक्रीज क्यों नहीं करता? बिकॉज बाकियों में क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है ना भाई. बाकियों में क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा. क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व ही सिर्फ एप्ला के अंदर हो रहा है. वो इंटरफेयर करता है ना, उसके अंदर ही प्रेजेंट होती है ना एंटी बीटा टू ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी, तो क्लॉटिंग फैक्टर के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, तो इंट्रिंसिक पाथवे को ब्लॉक कर देता है. देन वी आर टॉकिंग अबाउट डीआईसी. डीआईसी के अंदर तो एवरीथिंग गोज फॉर अ हेपेजार्ड थिंग. तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो हो रहा था डीआईसी से, बट एपीटीटी भी इंक्रीज हो रहा था. बट देन यू वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द फटीग जॉइंट पेन, एंड दिस इज व्हाट इज नॉट गोइंग टू बी मैचिंग ओवर हियर. सो साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है दैट देयर वुड हैव बीन इंक्रीज इन द फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स. फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है. परसेंटेज ऑफ केसेस अफेक्टेड इन लेडन, मतलब ओवरऑल परसेंटेज नहीं, मुझे ऐसे परसेंटेज याद नहीं है. ओवरऑल अगर कॉजेज में हम बात करें तो इट इज गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटिंग टू, अगर 100 पेशेंट्स हैं कंजेनाइटल हाइपरकोagulability का, तो लीडेंस जो होता है वो सबसे कॉमन कॉज होता है, तो वो 50% से ज्यादा होता है. ठीक है. यहाँ पे जो डीआईसी के बारे में आपने ध्यान रखनी है, वो इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है. यहाँ पे जो इसके साथ में हो सकता था वो डी डाइम हो सकता था. डीआईसी का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होगा एग्जाम के अंदर, दैट इज ऑन द टेग पैटर्न थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी, विच इज गोइंग टू बी शोइंग यू, एज आई मेड अ मेंशन ऑफ यस्टरडे एज वेल, ड्रॉप ऑफ डेथ. ठीक है, ड्रॉप ऑफ डेथ. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन. 65-year-old man presents with progressive nephrotic syndrome, hepatomegaly, and restrictive cardiomyopathy. Fat biopsy shows apple green birefringence under polarized light with Congo red stain. तो ये तो आसान चीज हो गई. सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस reveals monoclonal spike in the gamma region, which is the following is the likely cause. तो पहले तो हमें पता चल गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, हिपैटोमेगैली है और एमाइलॉइड है. तो एमाइलॉइड इंड्यूस नेफ्रोपैथी हो गई, एमाइलॉइड इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी भी हो गई इस पेशेंट के अंदर. बट उसने वो तो आपको बता ही दिया माइलोडोसिस है. बट द इंपॉर्टेंट हिंट दैट यू गॉट इन द क्वेश्चन एग्जाम इज सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न दे दिया उसने आपको, जहां पे उसने बोला आपको मोनोक्लोनल स्पाइक है. मोनोक्लोनल स्पाइक जो होती है, इसी को आप नाम देते हो एम स्पाइक. इस पे नीट पीजी एग्जाम के अंदर 2024 के अंदर क्वेश्चन आया था. 90% पेशेंट्स के अंदर जो स्पाइक होती है दैट इज बिकॉज ऑफ आईजीजी. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आईजीजी, दिस इज गोइंग टू बी अ पेशेंट हु इज गोइंग टू बी सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल मायलोमा. Rarely, what can happen is instead of IgG, patients can be having the other antibody, which is going to be IgM. This was the NEET PG 24 question. IgM और मल्टीपल माइलोमा के साथ में आया था. सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन था, वो आपको याद आ गया होगा. बट इस पेशेंट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट देयर इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ लाइट चेन्स ऑफ द एंटीबॉडीज. So when there is a light chain of the antibodies being produced in a higher amount, of course, the nature of the disease over here is going to be primary ill. Primary ill. ट्रांसथायरेटिन अगर वाइल्ड होता तो आपको हमने डिस्कस किया था. ट्रांसथायरेटिन इफ इट इज वाइल्ड, इट इज अ फीचर ऑफ सेनाइल सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस. इफ इट इज गोइंग टू बी म्यूटेटेड, it is going to be seen as a feature of familial amyloidotic polyneuropathy. If I'm talking about double A type of amyloidosis, that is seen as a feature of a patient having chronic inflammation or patients who are going to be having cancers. Two cancers which can result in double A type of amyloidosis, Hodgkin's lymphoma and RCC. Hodgkin's lymphoma and RCC. BCC में नहीं होता भाई. Hodgkin's lymphoma and RCC, right? When we are talking about dialysis related beta 2 microglobulin, that's obviously something which is known to us. That is what is going to be associated with the term A beta 2. A beta is what we are all aware of. A beta is what we are all aware of. That is going to be seen as a feature of Alzheimer's. ठीक. नहीं नहीं नहीं, आरसीसी एचसीसी को जो आप कह रहे हो, दे आर एग्जांपल ऑफ कार्सिनोमास व्हिच आर गोइंग टू बी हैविंग अ हेमाटोजेनस स्प्रेड. रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर कैन बी सीन एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्राइमरी एमिलोइडोसिस आल्सो ना. अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आइसोलेटेड की बात कर रहे हो तो, अगर आइसोलेटेड कार्डियोमायोपैथी की बात कर रहे हो तो देन आप एटीटीआर के बारे में सोचते हो, सिनाइल कार्डियक माइलोडोसिस. यहाँ पे तो मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व है ना, लिवर भी इन्वॉल्व है, स्प्लीन भी इन्वॉल्व है, कार्डियक टिश्यू भी इन्वॉल्व है. सो दिस इज अ पेशेंट हु इज गोइंग टू बी सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन लाइक मल्टीपल माइलोमा. ठीक है. व्हाट इज द कॉमनेस्ट ऑर्गन अफेक्टेड इन अ पेशेंट हैविंग अमाइलोइडोसिस? कॉमनेस्ट ऑर्गन अफेक्टेड कौन सा होता है ओवरऑल? That is going to be the renal tissue. And where exactly in the kidney? The first place in the kidney where amyloid is going to get deposited. First place in the kidney where amyloid is going to get deposited is in the mesangium. Mesangium. First place in the liver, space of disease. वो तो हमें पता ही है. ठीक है. चलो.
Next, we are talking about a 42-year-old man who is going to be having the presence of a dark colored urine in the morning, chronic fatigue, and episodic abdominal pain. Laboratory check shows hemoglobin of 9.2, increased reticulocyte count. Retic count increase means bone marrow is working properly. LDH is increased, that means chances of hemolysis. Haptoglobin is decreased, that means hemolytic anemia. Flow cytometry ने बोल दिया absence of CD55. ये तो आसान ही हो गया question. So the first step of the question is that what is the likely diagnosis? We are dealing with a patient who is going to be suffering from a condition that is going to be given the name of PNH. Now, what exactly is going to be the problem? We are going to be having what kind of hemolysis over here? Intravascular hemolysis. What's the reason for the intravascular hemolysis? Activation of the complement system. Why is the complement system getting activated over here? Because there is nothing to protect. So there is no GPI linked proteins. So the answer is intravascular hemolysis, absence of GPA proteins, complement mediated damage. So that's why the patients are going to be having the first morning sample, which is going to be having the presence of dark urine. That is going to be given the name of, the altered way of calling it as per the name of is the passage of tea colored urine. What's going to be causing death of this patient? Death of this patient is going to be seen because of hepatic vein thrombosis. And the other important thing that we need to remember is what is going to be the screening test for this condition. Need PG question, screening test, INI mid May 24 question. Screening test is given the name of HAMS test, acidified serum test or HAMS test. The second screening test that is going to be done for this patient is the sucrose lysis test, sucrose lysis test. And finally, the confirmatory test is going to be done in these patients. That is done with the help of something like the flare flow cytometry, right? तो हम उसको कर सकते हैं, जेल कार्ड से भी कर सकते हैं उसको, but that is purely dependent upon the fact is it is not confirmatory. Confirmation flow cytometry से होती है, right? If I'm going to be talking about the option B over here, IgG mediated opsonization of RBCs leading to extravascular hemolysis, this is going to be seen as a feature of a patient who's going to be having warm autoimmune hemolytic anemia. This is warm autoimmune hemolytic anemia, which we discussed just now, right? If I'm going to be talking about IgM autoantibodies binding to RBCs at cold temperature causing complement activation, this is going to be seen as a feature of cold autoimmune hemolytic anemia and cold agglutinin disease. Cold agglutinin disease. And which particular condition comes to your mind if I'm talking about option D over here? Option D over here, unconjugated hyperbilirubinemia, that can be seen in a patient who is going to be having Gilbert syndrome. Age के हिसाब से 42-year-old man है, तो Gilbert syndrome is a likely cause. नहीं, वार्म ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर डॉक्टर साहब एक्स्ट्रा वैस्कुलर हेमोलिसिस होगा ना, एंटीबॉडीज आ जाएंगी, एंटीबॉडीज कोट कर लेंगी, सो उसके बाद स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस उसको अटैक करते हैं. इंट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस नहीं होता इसके अंदर. इंट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस के दो कॉजेज आपने याद रखने हैं. वन इज पीएनएच, सेकंड इंपॉर्टेंट कॉज दैट यू नीड टू रिमेंबर इज J6PD डेफिशिएंसी. थर्ड रेयर कॉज जो बच्चों के अंदर होता है दैट इज पीसीएच. ठीक है, तो पीसीएच, पीएनएच और J6PD डेफिशिएंसी दे शो इंट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस. बाकी सबके अंदर एक्स्ट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस होता है. बाकी सबके अंदर एक्स्ट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस. क्रिगलर नजार क्यों होगा यार? 42-year-old मैन है भाई, 42. क्रिगलर नजार बच्चों की प्रॉब्लम होती है, अमन, बच्चों की प्रॉब्लम होती है ना वो. ठीक है, तो पेडियाट्रिक प्रॉब्लम है ना वो, तो नियोनेट के अंदर होता है, तभी तो फिनोबार्बिटॉन देके आप उसको ठीक करते हो. एग्जाम में क्वेश्चन आया था. ठीक है, चलो. देन वी आर टॉकिंग अबाउट पेशेंट हु इज गोइंग टू बी 7-year-old बॉय हैविंग मेडिटेरेनियन डिसेंट. तो वही जो हमारा वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने बात करी थी, पंजाबी फैमिली का होगा बच्चा, या फिर सिंधी फैमिली का होगा, या बंगाली फैमिली का होगा, या रेड्डी मतलब आंध्रा वाली फैमिली का होगा, साउथ से होगा. सो माइल्ड फटीग, माइक्रोसिटिक एनीमिया, hemoglobin is 10.5, MCV 66, RBC count of 5.8. What is the following the likely diagnosis? So in such questions, the first thing that you need to calculate is Menzer index. Menzer index is going to be RBC count. RBC in the denominator and in the numerator is going to be having MCV. So what you're going to be having over here, the value is 66 divided by 5.8. 5.8 को अगर मैं 6 भी मान लूं तो the value is going to be less than 13. So this is going to be a patient who's going to be having thalassemia. Iron deficiency rule out कर दिया, sideroblastic anemia rule out कर लिया. Now logically speaking, which type of thalassemia is more likely to be seen, right? Then the answer over here is going to be pretty obvious. That is going to be beta thalassemia minor. Beta thalassemia minor. Right? Beta thalassemia minor. When I'm talking about beta thalassemia minor, I can be performing a screening test over here. This is what is going to be given the name of Nesterov test. This is what is going to be given the name of Nesterov test. How do I confirm it? By doing the HPLC or doing the globin gene sequencing. What is the hemoglobin that I'm looking for in case of beta thalassemia minor? That is I'm looking at is HbA2. HbA2. Value more than 3.5 HbA2. ठीक है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में रूल आउट कर लिया बिकॉज हमारी वैल्यू जो है वो लेस देन 13 आई है. मोर देन 13 आती तो हम सोचते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, इवन दो दैट वुड हैव बीन द कॉमनेस्ट थिंग. But when we are talking about something called as alpha thalassemia trait, alpha thalassemia में single gene deletion or double gene deletion is going to be asymptomatic. 3 gene deletion is going to be associated with some symptoms. 4 gene deletion is going to be fatal for the patient. Sideroblastic anemia में in the peripheral smear you are going to be having the presence of basophilic stippling. In the bone marrow examination you will be having the presence of sideroblast. So the blue colored cells which are going to be having the presence of a perinuclear location, they are what are going to be seen on the bone marrow examination. Right? That's what you need to remember.
21-year-old man undergoes colonoscopy due to family history. ये यूएसए के अंदर काफी कॉमन होता है, हमारे देश के अंदर भी इसका प्रेवलेंस बढ़ रहा है धीरे धीरे, बिकॉज पीपल आर ईटिंग मोर अमाउंट ऑफ जंक फूड दीज डेज. अर्ली एज examination revealing hundreds of colonic polyps. So we are likely to be dealing with a patient who's going to be suffering from a condition called as familial adenomatous polyposis. Family history is positive. A young man, he's having multiple colonic polyps and he's having the presence of germline mutation in a tumor suppressor gene. So when we're talking about the germline mutation in the tumor suppressor gene, which particular gene is likely to be affected? Of course, that is going to be a patient suffering from APC. APC. Chromosome location 5q, as you're aware of. Sequence is what we are aware of. पहले APC involved होता है, फिर KRAS होता है, फिर P53. So that is an example of a multi-step carcinogenesis. Multi-step carcinogenesis. If I would have been talking about KRAS, KRAS would have been an example of a proto-oncogene which is going to be responsible for causing the trouble in this kind of a patient. If I'm talking about MLS, that is an example of a microsatellite instability problem that is going to be responsible for causing Lynch syndrome, right? If I'm talking about SMAD4, SMAD4 is going to be a reason for development of juvenile polyp. Juvenile polyp. So the best answer for the question over here is going to be undoubtedly the APC gene. Of course, we are all aware APC in combination with the CNS tumors is given the name of Turcot syndrome. APC plus fibroma plus osteoma is what is going to be given the name of Gardner syndrome. Why are we not having KRAS as the answer? डॉक्टर साहब क्वेश्चन करोगे ना, पूरा पढ़ोगे. जेनेटिक टेस्टिंग ने आपको बता तो दिया, प्रॉब्लम इज इन द ट्यूमर सप्रेसर जीन, नॉट इन द प्रोटोऑन्कोजीन. केरास रास तो प्रोटोऑन्कोजीन था ना मेरे भाई. और टॉपिक बताया था ना, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और साइक्लिन्स. तो प्रॉब्लम यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन में भी है ना. ठीक है, केरा से भी पॉलिप हो सकते हैं, लेकिन केरा से होता है प्रोटोऑन्कोजीन है, ट्यूमर सप्रेसर नहीं है ना. ठीक है, तो वो वाली चीज ध्यान रखती है, इसलिए आपने एपीसी को यहाँ पे मार्क करो. ठीक. चलो. 55-year-old male smoker presents with painless hematuria, flank pain, abdominal mass. Imaging shows renal mass with solid golden yellow cut surface. So हेमेचूरिया हो गया, स्मोकर है, पेशेंट की एज है, तो इसके हिसाब से आपने रूल आउट करना है कैंसर. रीनल मास है तो आरसीसी. क्लियर सेल्स विद एबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड हाईली वैस्कुलर स्ट्रोमा. So obviously जब आप क्लियर सेल्स की बात करोगे, you are dealing with tumor cells which are going to be having high amount of glycogen and lipids which are going to get washed off. So we are dealing with a patient who's going to be suffering from a clear cell cancer. क्लियर सेल कैंसर के अंदर पेशेंट्स के अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलती है? क्रोमोसोम 3p की डिलीशन आपको देखने को मिलती है. That is what is to be remembered over here, right? So this is what is going to be associated with VHL syndrome. VHL के साथ में हमने डिस्कस किया था क्लियर सेल कार्सिनोमा. Patients are going to be having pheochromocytoma and they can be having the presence of cerebellar hemangioblastoma. Cerebellar hemangioblastoma. So that's the other important thing that you need to remember. MET जीन का एसोसिएशन किसके साथ था? MET का था, ट्राइसोमी 7 का था, लॉस ऑफ क्रोमोसोम Y का था. दिस वाज अ फीचर ऑफ पैपिलरी. दिस वाज अ फीचर ऑफ पैपिलरी 1. FH आपका आईएनए का क्वेश्चन बन सकता है. FH मतलब होता है, FH का मतलब होता है फ्यूमरेट हाइड्रेटेस. सो जब हम इस वाले जीन की बात करते हैं, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी सीन इन अ पेशेंट हु इज गोइंग टू बी हैविंग अ कंडीशन दैट इज गिवन द नेम ऑफ हेरिडिटरी लियोमायोमेटोसिस. ये मेन वीडियो के अंदर था, हमने कल डिस्कस नहीं किया था. हेरिडिटरी लियोमायोमेटोसिस, हेरिडिटरी लियोमायोमेटोसिस प्लस आरसीसी. Fumarate hydratase, hereditary leiomyomatosis with RCC, that is again going to be seen as a feature of a patient who is going to be suffering from the papillary thyroid cancer, papillary subtype of kidney cancer, not thyroid, papillary renal cell carcinoma. What is the other finding of papillary cancers? Both these patients are likely to be having a high chance of exhibition of the presence of psammoma bodies. Psammoma bodies. Loss of chromosome 1 is going to be associated as a feature of a patient who is going to be having hypodiploidy. Hypodiploidy is going to be seen as a feature of a patient suffering from chromophobe carcinoma. क्रोमोफोब कार्सिनोमा. ठीक है. विच ऑफ दीज इज गोइंग टू बी क्लियर सेल में से, पैपिलरी कैंसर में से, क्रोमोफोब में से और बेलिनी डक्ट में से, विच वन इज गोइंग टू बी हैविंग एन एसोसिएशन विद बर्ट-हॉग-ड्यूब सिंड्रोम? विच वन इज गोइंग टू बी हैविंग अ एसोसिएशन विद बर्ट-हॉग-ड्यूब सिंड्रोम? ये कौन है भाई जो अपना इंस्टाग्राम का प्रचार कर रहा है? क्यों पेल रहा है बीच में? ठीक है, विच इज गोइंग टू बी हैविंग द प्रेजेंस ऑफ बर्ट-हॉग-ड्यूब सिंड्रोम. सो दैट इज बर्ट-हॉग-ड्यूब सिंड्रोम इज गोइंग टू बी क्रोमोफोब कैंसर. Which one is going to be having overall the best prognosis? Best prognosis chromophobe का होता है, oncocytoma से confuse नहीं करना. The one which is going to be having the poorest prognosis is going to be the biliary duct cancer. Which one is going to be seen in a patient having a history of sickle cell trait? Sickle cell trait patients are going to be having the presence of, the patients are going to be having medullary subtype of kidney cancer. Commonest cause of kidney cancer in the patients is tobacco use. Commonest gene mutation seen in a patient having kidney cancer, usually which is asked in the exam, is going to be the VHL gene mutation. ठीक है, तो ये वाली चीज खत्म. 47-year-old male patient, history of chronic diarrhea, weight loss, presents with flank pain and hematuria, and the urine analysis shows crystals with positive cyanide nitroproteins best explains the condition. Now, when we are talking about each of these conditions, they are going to be having a presence of different kind of stones. Hyperuricemia is going to be associated with uric acid stone. Urease producing bacteria is going to be associated with staghorn calculus. Hypercalciuria is going to be associated with calcium oxalate stone. This one is what is going to be associated with a cystine stone.
Now, the question is making a mention of the fact that the crystals are showing you the presence of a positive cyanide nitroprusside test. That's an example of a biochem link over here. Cyanide nitroprusside test is applicable for the cysteine crystals. Hardest stone जो होता है उसके लिए applicable होता है. तो इसका आंसर जो हो गया, अगर आपको ये पॉइंट पता था, बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं पता था तो आपने एक नई चीज लर्न करी. सिस्टीन के साथ में आपको रिएक्शन देखने को मिलता है जिसको आप नाम देते हैं साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट. साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, सो दैट इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सिस्टीन स्टोन. ऑफ कोर्स जिस चीज ने आपको कंफ्यूज किया था वो नहीं, मैंने नहीं बताया था यार. ये साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड हमने सी एन टेस्ट, सी फॉर सिस्टीन और सी से साइनाइड, अगर आप ऐसे याद रख पाओ. बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर इज दैट यूजुअली वी एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ स्टोन टू बी प्रेजेंट इन केस ऑफ अ चाइल्ड, इन केस ऑफ अ चाइल्ड. सो आई होप इस वाली चीज ने आपको कंफ्यूज नहीं किया. ये चीज डेटरेंट थी, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए थी. आपने इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है आपको, इस क्वेश्चन के अंदर क्लिंचिंग पॉइंट है ये वाली चीज. ठीक है. अभी हम इसमें क्या चीज रिवाइज कर सकते हैं, शेप ऑफ स्टोन्स रिवाइज कर सकते हैं, विच कैन बी एन एग्जांपल ऑफ अ बायोकेमिस्ट्री, विच कैन बी एन एग्जांपल ऑफ एन इमेज बेस्ड क्वेश्चन. सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी हैविंग व्हाट काइंड ऑफ स्टोन्स, हेक्सागोनल क्रिस्टल्स और द बेंजीन शेप स्टोन्स. ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी हैविंग मोनोहाइड्रेट की होती है जिम, डंबल. डाइहाइड्रेट जो होता है सबसे कॉमन होता है, उसकी शेप होती है एनवेलप शेप. डी की शेप क्या होती है यूरिक एसिड की, देयर इज नो फिक्स शेप, सो इट इज गिवन द नेम ऑफ फ्लावर शेप और फ्लोरेट शेप और इरेगुलर शेप. C is going to be having a shape that is going to be given the name of coffin lid appearance. Coffin lid appearance. दो या तीन दवाइयां जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं, इनके कारण स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. एक होती है डायरेटिक जिसका नाम है ट्राइमटेरिन, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक है. सेकंड आपने ध्यान रखनी है दवाई जिसका नाम होता है जैंथीन, जैंथीन. और तीसरी होती है आपकी एंटी एचआईवी ड्रग जिसका नाम है इंडिनाविर. इंडिनाविर, इंडिनाविर का मैकेनिज्म एक्शन, इंडिनाविर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. भाई सारी चीजें हिस्ट्री में पेशेंट बोल रहा है, पेशेंट बोल रहा है कि वेट लॉस हो रहा है, तो वेट लॉस आप किडनी स्टोन से कैसे एक्सप्लेन कर दोगे. ये सिर्फ पॉइंट दिया हुआ है ना, इसका एज सच डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है फिलहाल के लिए, आप इसको ऐसे समझना. सो इंडिनावेर जो मैकेनिज्म एक्शन होता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोटीएज इनहिबिटर, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोटीएज इनहिबिटर. व्हिच प्रोटीएज इनहिबिटर इज गोइंग टू बी द सेफेस्ट, व्हिच प्रोटीएज इनहिबिटर इज गोइंग टू बी द सेफेस्ट, व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ प्रोटीएज इनहिबिटर्स बाय द वे. सेफेस्ट, तो सेफेस्ट का क्वेश्चन नहीं आता यार, सेफेस्ट तो आती है लेमिबुडिन पे क्वेश्चन आता है. प्रोटीएज इनहिबिटर का पॉइंट आपने याद दिखाना है. व्हिच ऑफ देम इज गोइंग टू बी शोइंग द प्रेजेंस ऑफ अ बूस्टिंग इफेक्ट, बूस्टिंग इफेक्ट. Boosting effect is going to be seen in case of ritonavir. 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 ठीक है. रिटोनाविर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर ड्रग्स एक्सेप्ट. रिटोनाविर कौन से प्रोटीएज इनहिबिटर का बूस्टिंग नहीं करती है, ये क्वेश्चन आया था आईएनआई के अंदर. रिटोनाविर इज नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग बूस्टिंग ऑफ विच प्रोटीएज इनहिबिटर. रिटोनाविर को आप साथ में देते हो ना किसी और दवाई के, रिटोनाविर को हमेशा किसी और दवाई के साथ में देते हो. तो रिटोनाविर किस कौन से प्रोटीएज इनहिबिटर की बूस्टिंग नहीं करती है, सेक्विनाविर की बूस्टिंग तो करती है वो, दारुनाविर की बूस्टिंग भी करती है वो. रिटोनाविर किसकी बूस्टिंग नहीं करती है, क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर. नेल्फिनाविर, नेल्फिनाविर. आईएनए का क्वेश्चन था, अगर आप याद रख पाओ. नेल्फिनाविर की बूस्टिंग नहीं कर पाती वो. अपार्ट फ्रॉम रिटोनाविर एनी अदर एग्जांपल ऑफ अ ड्रग व्हिच इज गिवन फॉर बूस्टिंग इफेक्ट, एनी अदर एग्जांपल ऑफ अ ड्रग दैट इज गिवन फॉर बूस्टिंग इफेक्ट इन एचआईवी ओनली दैट यू हैव रेड इट. हाँ जी, कोबिसी स्टार्ट, कोबिसी स्टार्ट किसकी बूस्टिंग करती है, कोबिसी स्टार्ट इज गिवन फॉर द बूस्टिंग ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड, कोबिसी स्टार्ट इज गिवन फॉर द बूस्टिंग ऑफ, हाँ ग्राविर्स की बूस्टिंग करती है. सो आपकी जो दवाइयां होती है जिसमें आप नाम पढ़ते हो दवाइयों के, जिसमें आप नाम पढ़ते हो, और कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन ही होता है यार, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन ही होता है. हाँ डोलोटिग्राविर होती है जिसके अंदर जो इंटीग्रेस इनहिबिटर्स होती है हमारी, उनकी बूस्टिंग करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो इस वाली दवाई को जिसका नाम होता है कोबिसी स्टैट, कोबिसी स्टैट. सल्फा सर शो स्टॉक ऑफ व्हीट और राइस. बाबू भाई मुझे सवाल समझ में नहीं आया आपका, वेरी आई एम सॉरी. सल्फा, सल्फा सर शो स्टॉक ऑफ व्हीट और राइस, सॉरी भाई. एक बार दोबारा उसको टाइप कर देना, मे बी यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस समथिंग, आई एम. ठीक है. सो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द स्टोन्स एंड द शेप्स दैट वी आर जस्ट नीडेड टू हैव एन आइडिया. देन ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर. Patient with a hemoglobinopathy was found to be having glutamate to lysine change, but the question is not asking about the beta 6 position. बीटा 6 पोजीशन के बारे में बात नहीं करें, बीटा 26 पोजीशन के बारे में बात करें. यहाँ पे 26 के बारे में जब भी हम बात करें तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका एचबीई, एचबीई. ठीक है. सो एचबीसी की अगर हम बात करते हैं, एचबीसी की अगर बात करी होती है तो 6 पोजीशन होती है. ग्लूटामेट टू लाइसिन की एचबी 6 पोजीशन होती है. अगर वेलिन की बात करें तो भी 6 होती है, बट दैट इज फॉर एचबीएस, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. पहले वो टेस्ट दिया था एचबीडी के अंदर जो होता है उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ग्लूटामेट का रिप्लेसमेंट हो जाता है, वो हो जाता है ग्लूटामीन के साथ में, वो होता है पोजीशन नंबर 121 पे. एचबीडी पंजाब 121.
पंजाब में लोग ऐसे बात करते हैं ना, सीधे सीधे बात करते हैं, प्लेन हार्टेड फिल्म सिंपल फोक्स होते हैं ना, दिल की बात करते हैं, तो ऐसे बात करते हैं 1 to 1। ऐसे याद रख सकते हो 1 to 1। HBD होता है हीमोग्लोबिन पंजाब, 1 to 1 बात करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रहेगा आपको। ठीक है, HBS और HBC जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से बात करते हैं। एस के अंदर तो ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो चला जाता है, अच्छे आदमी को भेज देते हो, बुरे आदमी को बुला लेते हो, ग्लूटामिक एसिड गोज, वेलिन इज वेलकम। HBC is what is going to be clear. HBC is going to be having the presence of lysine, so C at the sixth position, C at the sixth position, and HBE जो है वो आपको ध्यान रखना है, ग्लूटामेट टू लाइसिन, बट द पोजीशन चेंजेस 26। अच्छा तो आप, अच्छा तो डॉक्टर साहब इसमें कंसेप्ट ये वाला है कि आपने जो ध्यान रखना है, सल्फासेलाजीन जो होती है, सल्फीसॉक्साजोल जो होती है, क्रिस्टल यूरिया करा देती है, वो क्रिस्टल यूरिया करा देती है। सल्फर ड्रग्स जो होती है उनके साथ में रैश देखने को मिलता है मेरे भाई, ABC ऑफ रैश आपने याद रखा था ना। और साथ में पेशेंट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है क्रिस्टल यूरिया रहता है। कौन सी दवाई जो होती है जिसके साथ में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उसका नाम है सल्फीसॉक्साजोल। ठीक है। HBD जो होता है यार, इसमें ग्लूटामेट इज रिप्लेस बाय ग्लूटामीन, ग्लूटामेट इज रिप्लेस बाय ग्लूटामीन, 1 to 1, पोजीशन 1 to 1 पे कर देती है, 1 to 1। निमोनिक बन गया अच्छा सर। ग्लूटामेट किस जगह पे, ग्लूटामीन। चलो, सेफेस्ट प्रोटीज इनहिबिटर वाला सवाल नहीं था यार, वो था सेफेस्ट हमारी NRTI कौन सी होती है, सेफेस्ट NRTI में लैबिमिडीन आती है। प्रोटीज इनहिबिटर्स तो सारी की सारी जो होती हैं वो हमारी लाइपोडिस्ट्रोफी करा देती हैं, एक को छोड़ के। कौन सी प्रोटीज इनहिबिटर होती है जो लाइपोडिस्ट्रोफी नहीं कराती, उसका नाम तो आपको पता ही है, एटाजानाविर। एटाजानाविर, है ना, उस हिसाब से। इसके बाद क्या क्वेश्चन आया था इसके अंदर, HBS का क्वेश्चन तो आपको पता ही है, दैट दिस इज गोइंग टू बी हैविंग हैंड फुट सिंड्रोम। ये हैंड फुट सिंड्रोम वाला कंसेप्ट आएगा, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम वाला कॉन्सेप्ट आएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी हैविंग द प्रेजेंस ऑफ एन एस स्पाइक ऑन द हीमोग्लोबिन। एंड SBS इज व्हाट इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीज मैकेनिकल फ्रेजिलिटी, डिक्रीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। राइट, ये वाली चीज ध्यान। चलो जी नेक्स्ट वन। हम स्लो चल रहे हैं यार थोड़ा सा। 32-year-old man who is going woman who's going to be having presence of sudden onset of abdominal pain and vomiting, and it shows guarding and tenderness in the right upper quadrant. CT angiography shows thrombosis of the portal veins. He has no history of liver disease, malignancy or recent infections. Laboratory test shows PT to be normal, APTT normal, fibrinogen normal, सब कुछ ही नॉर्मल है भाई। प्रोथ्रोम्बिन G2021A mutation is going to be positive. Okay, प्रोथ्रोम्बिन की mutation है, so which of the following is the best explanation? Now, when we're going to be talking about this kind of a question, the only thing that you need to remember is that in case of factor 5 mutation, it becomes resistant. It becomes resistant. ठीक है, तो ये रेजिस्टेंट हो जाता है, ये जो मैकेनिज्म है रेजिस्टेंस टू एक्टिवेटेड फैक्टर 5, ये तो आपको ध्यान रखना है। दिस इज गोइंग टू बी सीन एज अ फीचर इन केस ऑफ लीडर्स म्यूटेशन। बट पेशेंट को तो यहाँ पे म्यूटेशन कौन सी है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन करा हुआ है, पेशेंट के अंदर म्यूटेशन है प्रोथ्रोम्बिन वाली। प्रोथ्रोम्बिन वाली म्यूटेशन इज गोइंग टू बी हैविंग अ प्रॉब्लम दैट देयर इज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, excessive production of prothrombin, because of which there is going to be more thrombin, and more thrombin means more formation deposition of fibrin, and that is what is going to be responsible for causing clot formation. So this particular prothrombin mutation is important because this is the second most common cause of hypercoagulability. ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरकोagulability है। तो डेल्टा 506 जब आपने पढ़ा, आर्जिनिन टू ग्लूटामिन आपने पढ़ा, दैट वाज फॉर लीडर्स म्यूटेशन फैक्टर 5। प्रोथ्रोम्बिन की म्यूटेशन जब आपने पढ़ी 2021 म्यूटेशन, दिस इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद the increased concentration of prothrombin, because of which the patients are going to be having clot formation. राइट, डेफिशिएंसी की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, डेफिशिएंसी की जब हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इज व्हाट इज नोन टू यू। डेफिशिएंसी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन जो होती है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस होती है, दे आर रिलेटिवली अनकॉमन कॉजेस, दे आर रिलेटिवली अनकॉमन कॉजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। सबसे पहले लीडेंस, देन प्रोथ्रोम्बिन, देन प्रोटीन सी प्रोटीन एस डेफिशिएंसी, देन एंटीथ्रोम्बिन डेफिशिएंसी, देन होमोसिस्टिन्यूरिया। अगर आपने वीडियो देखा है मेन वाले सेक्शन के अंदर, तो आप उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। दैट्स ओनली थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर। और कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें प्रोथ्रोम्बिन वाले में, बस दैट्स इट। Then we are talking about 41-year-old male who is having sudden onset of right-sided weakness and dysarthria. MRI shows ischemic stroke in the left middle cerebral artery. He has no atrial fibrillation, no atherosclerotic disease, no
traditional cardiovascular risk factors. So bubble contrast echocardiogram shows there is a presence of a transient right to left shunt. And which of the following is the most likely cause of the development of the stroke in this kind of a patient? So if the patient is going to be having the presence of a transient temporary right to left shunt, तो क्या हो जाएगा? If there is presence of a clot, the clot is going to move from the right side of the heart to the left side of the heart. This kind of a clot is what is going to be given the name of, this kind of embolism is given the name of paradoxical embolism. This is what is going to be given the name of paradoxical embolism. This is what is going to be given the name of paradoxical embolism. ठीक है, that is what you need to remember. Septic embolism from infective endocarditis is going to be having a characteristic feature. Patients will be having presence of high grade fever. They will be having rapidly changing murmurs, frequently changing murmurs over a period of time. So that's going to be a hint that you get in the question in the exam. If I'm talking about fat embolism following subclinical injury, GERD criteria याद आ रहेगा आपको. स्किन के ऊपर रैश आएगा. Patients are going to be having thrombocytopenia. There is anemia, and the patients are going to be having a history of a fracture of the long arm bones. Right. Amniotic fluid embolism तो मेल के अंदर होगा ही नहीं, ऑब्वियसली फीमेल के अंदर होगा, एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी शी इज गोइंग टू बी हैविंग अ डेवलपमेंट ऑफ लिवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ व्हिच द पेशेंट्स आर गोइंग टू बी हैविंग. पैराडॉक्सिकल इसलिए ना मेरे भाई, क्योंकि अगर एम्बोलिज्म की बात करते हैं, जो हार्ट कार्डियक टिश्यू से एम्बोलिज्म होगा वो नॉर्मली लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से आएगा ना. यहाँ पे पेशेंट्स के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये वाली प्रॉब्लम हो रही है. ये पेशेंट का हार्ट है, ये मरीज का हार्ट है, ठीक है. तो क्लॉट जो था वो बना था राइट साइड के अंदर, लेकिन वो लेफ्ट साइड में कैसे पहुंच गया? ये पैराडॉक्सिकल है, ये विचित्र है. विचित्र क्यों है? बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ डिफेक्ट. तो पेशेंट के अंदर यहाँ पे एएसडी है, फोरामेन ओवेल है ना, एएसडी डिफेक्ट हो गया जो आपका, इसके कारण ही यहाँ से यहाँ पहुंच गया, राइट से लेफ्ट ऐसे आ गया, घूम के नहीं आया लंग से, तो दैट इज कॉल्ड एज पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म. ठीक है, इसलिए इसको पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म कहते हैं. इसके साथ में इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? इसके साथ में आती है इसकी फार्माकोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है कि व्हेनेवर वी हैव टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ एन एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना को प्रिवेंट करने के लिए आप दवाइयां रिवाइज कर लेते हो. व्हेन वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की हिस्ट्री का मैच कर रही है यार. वीकनेस और डिस्चार्ज हो रहा है ना, सिर्फ आपको शावरिंग ऑफ द क्लॉट की एम्बोलिज्म की हिस्ट्री मिल रही है. फीवर नहीं आ रहा आपको, हाई ग्रेड फीवर होना चाहिए, चेंज इन द मर्मर होने चाहिए. अगर ऐसी कोई हिस्ट्री होती तो फिर आप बात कर सोच रहे होते हैं ना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बारे में. इसके साथ में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है एंटीकोagulation का. एंटीकोagulation में वॉरफेरिन की कहानी सबको पता है? नहीं, एज इसमें मैटर नहीं कर रही, इसमें एज मैटर नहीं कर रही. कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर पैराडॉक्सिकल इसलिए है ना बिकॉज वो अभी भी रह गया, उसका नॉर्मली तो क्लोज होना चाहिए ना. फोरामेन ओवेल जो होता है वो इतनी एज तक थोड़ी ना रहता है, परसिस्ट करता है. अगर मेरे अंदर आपके अंदर था भी फीटल लाइफ के अंदर तो ठीक हो जाता है ना, बट इसमें परसिस्ट कर रहे हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट वारफेरिन, वारफेरिन इज गोइंग टू बी एक्टिंग बाय इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम. एंजाइम भी बात करा दो वारफेरिन का. वारफेरिन का एंजाइम होता है वीकेओआर. वीकेओआर विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम होता है, वीक और एंजाइम होता है. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स 2, 7, 9, 10, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस. Protein C, protein S are going to be having short half life, so patients are going to be having Patho syndrome or dermal vascular necrosis. 2, 7, 9, 10 के अंदर patients are going to be having disappearance of factor 7, so the monitoring is done with the help of PT. Patients who are going to be having warfarin are going to be having immediate onset of action or late onset of action. जल्दी से बता दो, immediate onset of action होता है, late होता है, delayed onset of action होता है, so it is given for maintenance therapy. Is it going to be safe in pregnancy? Warfarin, is it going to be safe in pregnancy? The answer is of course no. It is going to be responsible for crossing the barrier. And because it is responsible for crossing the barrier, we need to just remember the fact that the patients for giving a safer drug at the time of anticoagulation happens to be a drug that is going to be given the name of, the drug that is going to be given for safer anticoagulation happens to be a drug like heparin. A drug like heparin. That is what you need to remember. अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे आपने वारफेरिन दे दी, so that is responsible for causing a syndrome which is called as Contradi syndrome. Contradi syndrome. Contradi syndrome is what is given the name of fetal warfarin syndrome. Right? Contradi syndrome और fetal warfarin syndrome. ठीक. इसके अलावा मेरे को फटाफट रिवाइज करके बताओगे एग्जांपल ऑफ अ ड्रग व्हिच इज गोइंग टू सेलेक्टिवली इनहिबिट फैक्टर 10. ओरली इफेक्टिव ड्रग व्हिच कैन इनहिबिट फैक्टर 10. जल्दी से नाम बता दो. ओरली इफेक्टिव ड्रग गिवन फॉर फैक्टर 10. नाम बता दो ना यार. फैक्टर 10 की बात हो रही है, डेबिगेट्रान कैसे हो जाएगी यार? रिवारोक्साबैन अपिक्साबैन की बात करो ना भाई. फैक्टर 10 की बात हो रही है ना. 10 ए के साथ में बैन कर दिया, रिवारोक्साबैन अपिक्साबैन हो जाएगी. जब आप दवाई की बात करो जिसका आपने नाम लिया डेबिगेट्रान की आपने बात करी, तो डेबिगेट्रान इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर इनहिबिटिंग फैक्टर 2. डेबिगेट्रान इज रिस्पांसिबल फॉर इनहिबिटिंग फैक्टर 2. तो ये बेसिक सी चीजें हैं एग्जाम के लिए आपको याद रखनी है. ठीक. हाँ, वो एग्जांपल होती है डीटीएस का, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स है ना वो. हेपारिन पता ही है आपको, इंडायरेक्ट एक्टिंग थ्रोम्बिन इनहिबिटर है. तो पढ़ लेना एग्जाम के अंदर, इसके बारे में क्वेश्चन जो है टॉपिकली आते हैं, बट हम फंबल कर जाते हैं अगर हमारे को क्वेश्चन के बारे में ध्यान ना हो. चलो आगे बढ़ जाते हैं. 48-year-old male presenting with history of chronic alcohol presents with progressive dyspnea, lower extremity edema, orthopnea, echocardiography shows dilated left ventricle with severely reduced
इजेक्शन फ्रैक्शन। और पियो दारू, डी से डायलेटेड कार्डियोमैपैथी हो गई इसको बेचारे को, और अगर डायलेटेड कार्डियोमैपैथी हो गई तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग द ट्रबल, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा। Endomyocardial biopsy is performed and shows interstitial fibrosis with scattered myocyte degeneration, which is the mechanism responsible for this condition. So of course we are aware of the fact, I mean ये तो direct question है ना कि ethanol is responsible for acting as a mitochondrial toxin. So ethanol causes mitochondrial toxicity, that is responsible for ethanol being an important reason for development of sideroblastic anemia also. Ethanol is responsible for causing mitochondrial damage, so it is responsible for causing the trouble over here in the cardiac fibers as well. Right? What is going to be the biopsy finding of a patient who's going to be having this kind of a situation? Patients are going to be having the presence of myocyte hypertrophy. Right? Apart from alcohol, हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम आपने याद रखना है, यहाँ पे बिंज ड्रिंकिंग आपने याद रखनी है, प्रेगनेंसी याद रखनी है, एनीमिया याद रखना है, ड्रग्स लाइक डॉक्सोरोबेसिन, एड्रियामाइसिन, डोनोरोबेसिन, ट्रास्टोजुमैब, पर्ट्यूजुमैब, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. If I'm talking about a genetic cause of dilated cardiomyopathy, you have to remember about TTN gene and titin, which is an example of mutation that we talked about yesterday, showing an appearance which is called as the ninja star appearance. फर्स्ट वाली जो ऑप्शन होगी वो किसकी होगी? फर्स्ट वाली ऑप्शन जो होगी कौन सी बीमारी के अंदर होगी? आपको पता चल गया, कार्डियक टिश्यू को रिप्लेस कर दिया फाइब्रोफैटी टिश्यू से, राइट वेंट्रिकल को इन्वॉल्व कर दिया एआरवीसी, right? Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. If I'm going to be talking about second one, banana like heart होगा, asymmetrical ventricular septal hypertrophy, left ventricular outflow tract obstruction, HOCM. HOCM ये तो नाम से बता रहा है ना, बीटा मायोसिन हेवी चेन. ठीक. If I'm talking about extracellular amyloid deposition within the myocardium, that is going to be seen as a feature of restrictive cardiomyopathy. So बी एंड डी के ऊपर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आए थे आईएनआई के अंदर 2023 2024 के अंदर. फर्स्ट वाले के ऊपर क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, I mean आपके ऑप्शंस के अंदर, एंड डायरेक्टेड कार्डियोपैथी वाज गिवन एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम, रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग डेवलपमेंट ऑफ अरिथमिया एंड कॉजिंग डेथ ऑफ द पेशेंट. प्रोटोऑन्कोजीन्स और कैंसर्स को मैच करना है आपने ऑब्वियसली. जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बीसीआर एबीएल की, तो बीसीआर एबीएल के साथ में सबसे कॉमन जीन जो आप, सबसे कॉमन कंडीशन जो आप एसोसिएट करते हो, दैट इज सीएमएल. सीएमएल के अलावा इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एएलएल. द डिफरेंस इज व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद CML, the prognosis is good. When it is associated with ALL, the prognosis is bad. Next one that I need to talk about is MIC. MIC can be CMIC, NMIC, or LMIC. So MIC can be NMIC, and that can be associated with something like B4. Then talking about C, HER2 new. HER2 is very, very important for development of breast cancer. HER2 is already responsible for causing breast cancer. नहीं, अगर हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर ऑलरेडी वो ले रही है पेशेंट और फर्स्ट टाइम उसका निकल है, देन वी डू नॉट स्विच. गोल्डन रूल नॉर्मली होता है कि अगर पेशेंट ऑलरेडी स्टेबलाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, वी डू नॉट स्विच, चाहे एंटीप्लेप्टिक की बात करें चाहे किसी और की बात करें. सी के साथ में आपने इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, HER2 का इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट इज फॉर स्टमक कैंसर एज वेल. ये मैंने आपको कल बताया था, आपको याद रखना है. और फिर अगर हम बात करें, भाई ब्रेस्ट कैंसर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ स्टमक कैंसर के साथ रिलेशन है इसको. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बी, रेट जीन, सो रेट इज व्हाट इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद MEN2, मेडुलरी थायराइड कैंसर. सो आपका आंसर हो गया A3B4 C241, ये आपका आंसर है. टेक होम पॉइंट क्या यहाँ पे है हमारा कि genes and cancers, similarly tumor markers are cancers, similarly biopsy finding and cancers, these are the standard way by which the match the following questions are going to be asked in the exam in the INICT. And why should such questions not be asked in the NEET PG exam? वो भी वहां पे भी आ सकते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. अभी इंपॉर्टेंट चीज आप मेरे को बता सकते हो, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स बता सकते हो मुझे एएलएल के साथ में. अगर मैं बोलता हूँ कि एएलएल इज गोइंग टू बी सीन इन केस ऑफ अ बॉय, प्रोग्नोसिस गुड और बैड, गुड और बैड बताते रहना बस. बॉय के केस में prognosis is bad. If I'm going to be talking about a translocation 1221, good prognosis. Trisomy 4710, good prognosis. Involvement of mediastinum and testicular tissue, poor prognosis. Poor prognosis. L2 phenotype, poor prognosis. L1 phenotype, prognosis is good. Tumor burden of 80,000, less than 1 lakh, good prognosis. Tumor burden of 2.5 lakhs, poor prognosis. Involvement of systemic organs, poor prognosis. B cell ALL, good prognosis. T cell ALL, bad prognosis. 13-year-old patient having ALL, teenager having ALL, bad prognosis. Bad prognosis. 5-year-old patient having ALL, good prognosis. So prognostic factors आपको याद करने हैं, एग्जाम में बार बार आपसे पूछते हैं. ठीक. बाकी तो हम यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं, हम चैंपियन बन चुके हैं MEN2A MEN2B के, है ना, सिप्पल सिंड्रोम एंड स्टफ. चलिए. Match the following tumor suppressor genes with their functions. Now that is something which hopefully, हाँ, 1 to 10 के अंदर गुड प्रोग्नोसिस है ही, वो तो हमें पता होना चाहिए. अब ये एक ट्विस्टेड वे ऑफ क्वेश्चन था यार. बी सेल का प्रोग्नोसिस गुड है रुपिंदर, ये तो मैं डिस्कस किया था भाई. बी से बढ़िया ना, शानदार, बढ़िया मतलब शानदार, गुड.
सो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट P10। P10 के साथ में आपने एसोसिएट किया था काउडन सिंड्रोम। काउडन सिंड्रोम की हमने बात करी थी। काउडन सिंड्रोम के साथ जब भी आप देखोगे तो वो क्या काम करेगा, वो माइटोजेनिक एक्टिविटी को कम करेगा। माइटोजेनिक एक्टिविटी को कम करने का मतलब है वो इनहिबिट करता है PI3 के पाथवे को। PI3 के पाथवे, ये आइनाइट लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपको आता है समझ में तो बहुत अच्छी बात है। इसको इसमें से टेक होम पॉइंट है जो आपको लेके जाने हैं। Whenever we are going to be talking about BRCA, BRCA is what is going to be involved in the DNA repair. That is already asked in the exam as a question. That is what we talked about multiple times. ठीक है. Then we are going to be talking about option C, NF. NF is an example of a tumor suppressor gene. Why is it an example of a tumor suppressor gene? Because it is going to reduce the activity of activated RAS. तो ये RAS की एक्टिविटी को कम कर सकता है. So this is going to be C1. C1. अब अभिषेक, अगर तुमने बी से बैड कर दिया तो फिर एग्जाम में बैड रिजल्ट आएगा भाई। क्यों ऐसा करना चाहते हो? अच्छा कर लो, बढ़िया कर लो, बेटर कर लो। बी से बैड बेटर भी तो हो सकता है। मतलब डंडा तो डंडा ही होता है ना। इट इज द सेम बैम्बू ना, यू कैन बी यूटिलाइजिंग इट फॉर मेकिंग समथिंग एंड यू कैन बी यूटिलाइजिंग फॉर समथिंग एल्स एज वेल। तो बांस का सही इस्तेमाल करो यार, गलत जगह क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? डी का मतलब होता है सीटी के एंड, दैट इज गोइंग टू बी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस एंड दिस वन इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर इनहिबिशन। सीडी के एन होता है ना, सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर D2। ठीक। सो A3 B4 C1 एंड D2। A3 B4 C1 एंड D2, तो आपका आंसर हो गया इसमें ये वाला। ठीक है, ये वाली चीज हमें याद रखनी है। सीडी के एनबी का हमने रोल पढ़ा था मैन सिंड्रोम के साथ में, दैट इज एसोसिएटेड विद मैन 4। सो मैन 4 के अंदर द फीचर्स आर जस्ट लाइक मैन 1 एक्सेप्ट दैट द जीन दैट इज नॉट इन्वॉल्वड ओवर हियर इज CDKNB1। सीडी मैन 5 के साथ हमें रोल पड़ा था मैक्स जीन का, मैक्स ट्यूमर सप्रेसर जीन। सो पेशेंट्स आर गोना बी हैविंग द प्रेजेंस ऑफ बायलेटरल फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है। बरका 1 बरका 2 आप ऑलरेडी चैंपियन बन चुके हो। इसके अंदर BRCA1 कहाँ पे होता है? BRCA1 कहाँ पे होता है? विच क्रोमोसोम, विच आर्म? 17q के ऊपर। एंड BRCA2 इज व्हाट इज गोइंग टू प्रेजेंट ऑन 13q, है ना? सो दैट इज व्हाट इज नोन टू यू। और इसमें बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है। BRCA जीन्स जो होते हैं दे आर DNA रिपेयर जीन्स, बट दे आल्सो रिक्वायर द हेल्प ऑफ हेलिकेज। दे आर आल्सो गोइंग टू बी रिक्वायरिंग द हेल्प ऑफ हेलिकेज। तो फीमेल ब्रेस्ट कैंसर में BRCA1 का रोल है, मेल ब्रेस्ट कैंसर के अंदर BRCA2 का रोल है। ठीक है, दैट इज व्हाट इन में क्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है ना यार, 17q 13q। 17q 13q की बात हो रही है ना यहाँ पे। और जब क्यू की बात हो रही होती है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग आर्म। ठीक। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। 5 month मेल प्रेजेंट्स विद रिकरेंट निमोनिया ओटाइटिस मीडिया एंड क्रॉनिक डायरिया। लेबोरेटरी फाइंडिंग शो सीरम IgM एलिवेटेड, IgG A and E are going to be absent or very low. Flow cytometry shows normal number of B and T cells. Genetic testing identifies a mutation in the CD40 ligand. Which of the following is a primary defect leading to this patient's immunodeficiency? So क्या प्रॉब्लम होगी पेशेंट्स के अंदर? अगर CD40L याद है, एल से रेडिक सेल्स की प्रॉब्लम है, इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम विद द T cells because of which the isotype switching cannot take place. Because the isotype switching cannot take place, so the patient is going to be having a problem in the class switching because of defective T cell health. B7 दो पॉइंट्स होते हैं। B7.1 होता है CD80, B7.2 इज CD86। ठीक है। whenever we going to be talking about these important facts, defective B cell signaling जो होती है वो कहाँ पे होती है? That is because of a problem at the level of B cell receptor signal that is going to be seen at the level of conditions in which the patients are going to be having hypogammaglobulinemia। हाँ, वाह वाह, कितनी सुंदर बात करी। एक और सुंदर निमोनिक रमजान के टाइम पे बता दिया मेरे भाई ने, डोरीमोन 7 का 86। खुश हो जाएंगे सारे के सारे लोग फ्यूचर के अंदर। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, है ना? विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी लेट्स स्टार्ट अगेन। फेलियर ऑफ न्यूट्रोफिल ऑक्सीडेटिव टेस्ट, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी seen as a finding। Neutrophil oxidative burst जो है that is going to be having a problem, that is going to be seen in a patient who's going to be having the presence of chronic granulomatous disease, right? And where are we going to be having the impaired formation of MAC? Impaired formation of MAC होता है whenever we are going to be having a deficiency of C5b678, and that is what is going to be responsible for toxoplasma neisseria infection। टॉक्सोप्लाज्मा नेसेरिया इन्फेक्शन, ये तो आपको पता ही है। सेबिन फेल्डमैन डाई टेस्ट, पुराना क्वेश्चन था। सेबिन फेल्डमैन डाई टेस्ट कौन सी बीमारी के लिए होता है? माइक्रोबायोलॉजी पूछ रहा हूँ थोड़ी सी। सेबिन फेल्डमैन, हाँ, टॉक्सोप्लाज्मा के लिए, टॉक्सोप्लाज्मा के लिए होता है, राइट? सो दैट इज व्हाट वी जस्ट नीड टू नो। बाकी तो हमने स्क्रीनिंग टेस्ट कर लिया इसका।
नाइट्रोब्लू टेट्राजोलियम कन्फर्मेशन कर लिया, फ्लो साइटोमेट्री करा दी, डाइहाइड्रोरोडामीन देख लिया हमने, इसका स्टैफ की इन्फेक्शन करा दी, कैटलेस पॉजिटिव करा दिया, बर्कुलेरिया की इन्फेक्शन करा दी, बहुत है यार, बहुत कुछ कर लिया। 57-year-old male patient presenting with progressive dyspnea on exertion, chronic dry cough. He is working in a shipyard for 25 years. X-ray shows pleural plaques and interstitial fibrosis, lower lobes. तो आपको डायग्नोसिस क्लियर हो गया, इसका एस्बेस्टोसिस है। एस्बेस्टोसिस है, कहाँ पे कष्ट आ गया भाई? न्यूट्रोफिलिक ऑक्सीडेटिव बस यार, chronic granulomatous disease भाई। So this is okay. This is going to be a patient who's going to be having the asbestosis, na? So asbestosis is what is going to be affected. Best of the people will have the basics clear. So asbestosis causes involvement of the base, and what these patients are going to be having the presence of ferruginous bodies. If there is an iron proteinaceous covering, that can be detected with the help of Prussian blue staining. Prussian blue staining, which is the most common cancer that is going to be expected to be seen in this patient in the lungs. मोस्ट कॉमन कैंसर दैट एक्सपेक्ट टू बी सीन इन दीस पेशेंट्स, कॉमन की बात हो रही है, एडिनोकार्सिनोमा की बात करेंगे आप, और अगर स्पेसिफिक कैंसर की बात हो रही है तो आप आंसर करेंगे मेसोथेलियोमा। ऑप्शन ए जो होती है वो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, नीट पीजी के अंदर एंड स्क्रीनिंग एग्जाम के अंदर, नॉन कैसेटिंग ग्रानुलोमा विद एस्टेरॉयड बॉडी इज अ फाइंडिंग ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम sarcoidosis. So asteroid body, Schaumann body is a finding of sarcoidosis. As I discussed earlier as well, patients are going to be having increased calcium levels. They will be having non-caseating granulomas, and they are going to be having the presence of increased ACE levels. Bronchoalveolar lavage is going to be showing you CD4, CD8 ratio, which is going to be having a reversal. Upper lobe involvement with fibrosis and birefringent crystals is a finding of कोमोनोबास्टोमाइकोसिस। डॉक्टर मॉन्टगोमेरी, कॉपर पेनी अपीयरेंस, मेरे भाई माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मत लेके जाओ, फिर हम फार्मा में घुस जाएंगे एंटी फंगल्स के अंदर। अपर लोब नोडुलर फाइब्रोसिस बायरफ्रिंजेंट पार्टिकल्स, दैट इज गोइंग टू बी अ फाइंडिंग ऑफ अ पेशेंट हैविंग सिलिकोसिस। Diffuse alveolar damage, diffuse alveolar damage with hyaline membrane formation is going to be a feature of a patient suffering from ARDS. So ARDS का स्टार्टिंग पॉइंट रिवाइज करा दीजिए, पिछले 5 साल के क्वेश्चन। ARDS का स्टार्टिंग पॉइंट इज एंडोथेलियल सेल इंजरी, endothelial cell injury. Remember the fact what is going to be the interleukin which is going to be playing an important role, interleukin 8. Why interleukin 8 is important? Neutrophilic activation. What is the reason for the formation of the hyaline membrane? That is because of fibrin deposition. What is the hallmark feature for ARDS? Diffuse alveolar damage. Treatment of primary cause is what can be saving the patient, otherwise prognosis happens to be grim. ठीक। Kaplan syndrome is equal to pneumoconiosis plus rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis plus splenomegaly plus neutropenia is called as rheumatoid arthritis plus neutropenia plus splenomegaly is given the name of Felties syndrome. बहुत बढ़िया, शानदार, आगे बढ़ जाइए। 27-year female presenting with fatigue, chronic mucocutaneous candidiasis, hypocalcemia. Lab shows PTH levels are low, adrenal insufficiency. Diagnosis बन गया आपका? Chronic mucocutaneous candidiasis भी है, hypoparathyroidism भी है, adrenal insufficiency भी है. So patient is going to be having the presence of autoimmune polyendocrineopathy syndrome type 1. That means the patient is going to be having a problem at the level of AIRE gene. And the problem that is going to be seen in this patient is going to be a problem at the level of negative selection of self-reactive T cells. नेगेटिव सिलेक्शन प्रॉपर्ली नहीं हुआ, जो खुद से रिएक्ट करे थे टी सेल्स वो ठीक से आपने नहीं उनको आइडेंटिफाई किया, उनको आपने डिस्ट्रॉय नहीं करवाया। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी कॉजिंग द ट्रबल इन द पेशेंट्स। पेरिफेरल एनर्जी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोस्टिमुलेटरी सिग्नल्स, ये तब होता है जब देयर इज अ प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ CD28 और देयर इज अ प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ B7। कोस्टिमुलेटरी सिग्नल्स अगर नहीं होते हैं तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग एनर्जी। सो सिग्नल 2 की जो हमने बात करी थी, कोस्टिमुलेटरी सिग्नल, जो गाड़ी को स्टार्ट करके गियर में डाला था, अगर गियर की प्रॉब्लम होती है कोस्टिमुलेटरी सिग्नल का एब्सेंस होता है। Failure of Tregs to suppress self-reactive lymphocytes. T regulatory cells होते हैं which are going to be controlled by the FOXP3 gene. They are going to be having a role that is being played in context of IPEX syndrome as well as multiple sclerosis. T regulatory cells are responsible for secretion of interleukin 10 as well as TGF beta. So they are responsible for development of immunosuppression. ठीक है? Whenever we're going to be talking about enhanced antigenic sequestration, and antigenic sequestration तो आपकी immune privileged sites के अंदर होती है. So I bet you know the answer. That is what is known to you. So when you're talking about the brain, when you're talking about the eye, when we're talking about the testicular tissue, that is what we are talking about. तो यहाँ पे कथा कहानी AIRE gene, autoimmune polyendocrineopathy syndrome, negative selection का failure, that is what you need to remember. लास्ट बार बोल रहा हूँ, याद रखना, टी सेल्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सिलेक्शन दोनों होता है, बी सेल्स के अंदर यू आर गोइंग टू बी हैविंग ओनली एंड ओनली नेगेटिव सिलेक्शंस, है ना। घर की बेटी, उसको आपने सम्मान के साथ सीक्वेस्टर करके रखना है, वो हिंदी वाला निमोनिक अगर आपने वीडियो देखी। टी रेग्स का या टी रेग मतलब टी रेगुलेटरी सेल्स, दे सिक्रीट इंटरल्यूकिन 10 एंड TGF बीटा।
So that is why they're responsible for decreasing the self-reactive lymphocytes. ठीक है मिलन, दैट इज वाई दे रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स. अगर ये फेल कर गए तो ये सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स के ऊपर ब्रेक नहीं लगा पाएंगे. सो देयर इज अ चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाई चांस ऑफ ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स. फिर से आ गया मैथ्स ऑफ फॉलोइंग. ये तो रिपीट क्वेश्चन है यार, ये तो इस बार के एग्जाम में आया था जो वही वाला था. अल्फा फीटोप्रोटीन इधर चला गया, बीटा एससीजी कोरियोकार्सिनोमा में चला गया, कैटेकोलामीन चला गया फियोक्रोमोसाइटोमा में. सीईए जो है दैट इज गोइंग टू बी सीन एज अ फीचर ऑफ मिडलरी थायराइड कैंसर. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू बी हैविंग A2B3C4 A2B3C4D1. जिस एग्जाम में जो आया था वो कैल्सिटोनिन आया था. यहाँ पे हमने सीईए कर दिया फॉर द सिंपल फैक्ट दैट सीईए इज गोइंग टू बी सीन इन अ पेशेंट हु इज गोइंग टू बी हैविंग कैल्सिटोनिन नेगेटिव मिडलरी थायराइड कैंसर. ठीक है. फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं. ये रिपीट क्वेश्चन था जो हमने टेस्ट में किया था पहले और ये इस बार के आईने के एग्जाम में आया था. So Peutz-Jeghers polyp is going to be having a role that is associated with STK11. Familial erythematous polyposis having a relationship with APC. Juvenile polyposis is with SMAD4 and tuberous sclerosis having a relationship with TSC1. So A3, B1, A3, B1, C4, D2. इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपने रिवाइज करनी है, Peutz-Jeghers polyps की लोकेशन रिवाइज करा दीजिए. दैट इज इन द jejunum. Peutz-Jeghers polyps is going to be having a location that is in the jejunum. Clinical presentation is in the form of intersection. Peutz-Jeghers syndrome is going to be having the presence of pigmentation in the second decade of life. Familial edematous polyposis, patients can be having multiple polyps which are present in their colon. More than 100 is what is required for making a diagnosis, and Turcot-Gardner and the other syndromes is what we talked about. Juvenile polyposis mein, they are going to be having the presence of location in the rectum. Age group is a child having age less than 4 years, and the gene that is involved over here is SMAD4. Microscopic pattern that is going to be seen in case of Peutz-Jeghers is going to be arborizing pattern, Christmas tree pattern, right? Branching pattern. Microscopic pattern that you get in case of juvenile polyp is you're going to be having the presence of mucin glands which are going to be associated with T cells and the lamina propria. AIRE और आईपेक्स गलत क्यों है यार? एक चीज याद रखते हैं ना, AIRE जो है वो एसोसिएटेड है ऑटोइम्यून पॉलीएंडोक्राइनोपैथी सिंड्रोम के साथ. AIRE जीन उसका काम है नेगेटिव सिलेक्शन. अगर ये फेल हो जाती है तो पेशेंट के अंदर ऑटोइम्यून पॉलीएंडोक्राइनोपैथी सिंड्रोम हो जाता है. इतनी चीज याद रखनी है. इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? ए से ए आ रही, ए से एपीएस, ऐसे याद रख लो. ठीक है. और जब हम बात कर रहे थे आईपेक्स की, आईपेक्स मतलब रेगुलेशन के अंदर प्रॉब्लम है, रेगुलेशन के अंदर प्रॉब्लम है. आईपेक्स एक्स आ गया ना इसके अंदर, तो फॉक्स जीन इन्वॉल्व है. फॉक्स फॉक्स पी3, फॉक्स पी3, एक्स और एक्स, आईपेक्स फॉक्स. आईपेक्स में फॉक्स इन्वॉल्व है, टी रेगुलेटरी सेल्स. एआईआरई के अंदर एपीएस इन्वॉल्व है. ठीक है, बस इतना से करना है. चलो नेक्स्ट बता दो आराम से. रिसर्चर is developing immunotherapy for targeting molecule that enables T cell activation. It is going to work by blocking a receptor expressed on the T cells which interacts with B7 on the cells. तो ये ब्रेक का काम कर रहा है. आपको पता है कि जब हम इसके साथ में बात करते हैं तो इसका स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल होता है CD28. वो तो एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और जो एक्टिविटी को कम करता है दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक CTLA4. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, CTLA4. ये तो हमने डिस्कस किया था ना कल भी. CTLA4 is going to be acting like a brake. CD28 is going to be acting like an accelerator. That's the important thing that you need to remember. CD28 का रोल हमें पता ही है, कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है. आइकोस जो होता है वो भी एग्जांपल है इम्यून कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल का, ये भी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है. एंड व्हेनेवर वी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट पीडी, इसका आपने रोल याद रखना है, इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर ड्रग्स. इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर ड्रग्स. तो जो हमने दवाइयां डिस्कस करी थी, निवोलुमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब, हॉजकिंस के साथ में, और भी जो अपने फार्मा के अंदर दवाइयां डिस्कस करी हैं, राइट, इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, वो PD1 और PDL1 की इंटरेक्शन को ब्लॉक करती हैं. वो PD1 और PDL1 की इंटरेक्शन को ब्लॉक करती हैं. राइट. ये PD1 भी ब्लॉकर का काम करती है, ये भी इनहिबिटरी होती है. बट व्हाई इज इट नॉट द आंसर? बिकॉज PD1 इज गोइंग टू बी इंटरेक्टिंग विद PD1 इज गोइंग टू बी इंटरेक्टिंग विद PDL1. यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर किससे इंटरेक्ट कर रही है? B7. क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है ना, तो इसलिए PD1 इज नॉट द आंसर. सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी CTLA. CTLA. ठीक है. छोटा सा कैच था, 28 और आइकॉस तो हो ही नहीं सकता. PD1 और CTLA इनहिबिटरी होते हैं. CTLA इंटरेक्ट करता है B7 के साथ में, PD1 जो होता है वो इंटरेक्ट करता है. PD1 इज अ रिसेप्टर, प्रोग्राम डेथ रिसेप्टर है. दैट इज गोइंग टू बी इंटरेक्टिंग विद द लिगैंड, सो लिगैंड इज गिवन द नेम ऑफ PDL1.
एनर्जी का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी, कैनॉट हैव एक्टिवेशन, कैनॉट हैव एक्टिवेशन. Physician is using liquid biopsy to monitor the treatment in response to a patient with non-metastatic small cell cancer. So the following is most relevant for detecting MRD. MRD होती है minimal residual disease होती है इसमें. And liquid biopsy is a concept that is going to be the future of making a diagnosis in case of cancers. What we are talking about in liquid biopsy is that you are going to be taking the sample of the patient. Blood sample of the patient is going to be taken, and in the blood sample, you are going to be detecting the presence of DNA from the tumor cells. So the DNA from the tumor cells is going to be given the name of cell-free DNA. Circulating tumor DNA is what is going to be detected over here with the help of this. इसके अलावा जो सेकंड चीज आप डिटेक्ट कर सकते हो, ये तो सबसे अच्छी चीज है, सेल फ्री डीएनए इज गोइंग टू बी डिटेक्टेड. दैट इज वन थिंग. Second thing which can be detected is going to be circulating tumor cells. Circulating tumor cells. So if this is a blood sample, my patient is having a cancer over here. Tumor cells are going to release their DNA material in the blood. And this DNA in the blood can be detected with the help of taking the blood sample of the patient with the help of the sample over here and then doing a analysis. So this is what is called as liquid biopsy. Liquid biopsy is any day more convenient for a patient in comparison to solid organ biopsy. Multiple samples can be taken and it is going to be having a very good result. The only thing is that we have to standardize this as of now. तो कुछ cancers के लिए, leukemias के लिए भी हम इस पे research कर रहे हैं. बाकी cancers के लिए जैसे जैसे research हमारी advance हो रहेगी, this is going to be the future for making diagnosis of cancers. ठीक है. बाकी तो ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट से, लिम्फोसाइट जो अंदर घुस गए ट्यूमर सेल्स को मारने के लिए, सीए जो है वो मार्कर है, और माइक्रो आरएनएस है. माइक्रो आरएनएस तो आप स्टडी करते हो, which are going to be either responsible for promotion of cancer or are responsible for inhibiting it. इसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपने साइलेंसिंग आरएनए और माइक्रो आरएनए कंसेप्ट आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा. अगर पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो भूल जाना. मतलब इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले माइक्रोसोम. एक्सोसोम्स का रोल होता है, एक्सोसोम्स का रोल होता है यहाँ पे, आई वुड नॉट डिनाई इट, बट वो नंबर 3 पे होता है. बट वो सेल और सेल की इंटरेक्शन के लिए होता है. सेल और सेल की इंटरेक्शन के लिए एक्सोसोम्स आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड. सो द आंसर इन द इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस इज सेल फ्री डीएनए, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स एंड एक्सोसोम्स. 58-year-old male presenting with long-standing diabetes and hypertension presents with progressive edema, foamy urine and fatigue. Analysis shows proteinuria 4.5 grams per day. Hematuria is absent. Microscopic examination, fatty cast, Maltese loss. What's the diagnosis? Of course, nephrotic syndrome. There is only one condition which is going to be having nephrotic syndrome over here, and that is nephrotic syndrome due to FSGS. Any other condition which is going to be having the presence of a Maltese cross? Any other condition which is going to be having the presence of a Maltese cross? Of course, we are aware that is Fabry's disease. Fabry's disease. Urine की बात कर रहे हैं, Fabry's disease. If I'm going to be talking about acute tubular necrosis, that is going to be showing you the presence of brown muddy cast. That is going to be having the presence of brown muddy cast. That is what we are aware of. Acute tubular necrosis से question जो आपके एग्जाम के अंदर आया था, that is usually seen because of presence of ischemic damage. Ischemic AKI. Whenever we're going to be talking about another thing which was asked in the question in the exam, if you remember, the patient was having a history of an infection, after which he was given fluoroquinolone, and after that the patient developed eosinophiliuria. Eosinophiliuria, allergic interstitial nephritis. Eosinophilic cast. Eosinophilic cast in the urine is a feature of allergic interstitial nephritis. Allergic interstitial nephritis. That's another important thing that we need to have an idea. Allergic interstitial nephritis. फिर हमारा पीएसएन तो ऑल टाइम फेवरेट है ही हमारा, जिसके अंदर हमें स्टारीज का अपीयरेंस मिलती है किडनी बायोप्सी के अंदर. वी आर हैविंग ट्रांजिएंट हाइपोकॉम्प्लीमेंटेमिया. वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ चाइल्ड हैविंग अ डेवलपमेंट ऑफ हेमेचूरिया हाइपरटेंशन आफ्टर 2 to 3 weeks after developing the bacterial pharyngitis and subepithelial humps. Pyelonephritis is going to be having the presence of WBC casts. Pyelonephritis is going to be having the presence of WBC casts. PSGN is going to be having the presence of RBC casts. एक कास्ट आएगी हमारे एग्जाम के अंदर, ब्रॉड वैक्सी कास्ट. Broad waxy cast. Broad waxy cast is something that you see in a patient who's going to be suffering from CKD. Broad waxy cast is something that you see in a patient suffering from CKD. ठीक, चलो.
65-year-old male who is having a history of 40 years of pack of smoking, 40 साल cigarette पी है, chronic cough, weight loss, hemoptysis, having centrally located lung mass, biopsy shows poorly differentiated small cell lung cancer. Which of the following genetic alterations is most likely responsible for this kind of a malignancy? Of course, you know the answer. EGFR and ALK are going to be mutations which are responsible for causing something like adenocarcinoma. And when you're talking about small cell cancer over here, it is going to be associated with LMYC mutation. L-MYC mutation. Right? What are going to be the markers that you're going to be having for the small cell cancer? That is what is known to us, chromogranin, synaptophysin, CD56. We are going to be having the presence of an intranuclear marker, which is given the name of the nuclear staining marker INSM1. Whenever we are going to be talking about the whenever we're going to be talking about small cell cancer, they are going to be highly aggressive in nature. So they are going to be the most aggressive subtype. Prognosis happens to be the worst. And this is an example of a cancer which is going to be associated with the presence of an effect in which you are going to be having the vascular staining, which is given the name of Azopardi effect. Azopardi effect. So that is what we just need to remember. Of course, if you are talking about EGFR and ALK, they are going to be seen in a patient suffering from adenocarcinoma. Patients having adenocarcinoma are going to be having the presence of markers like TTF1, napsin A, and surfactant protein A1. 45-year-old male presents with progressive dysphagia to both solids and liquids, regurgitation, weight loss, barium swallow showed bird beak appearance. This was the question asked in the exam, IN exam. Manometry shows increased lower esophageal sphincter pressure and absence of peristalsis. And then the question is asking you about which of the following is a likely cause for this condition. So that's going to be easy. This is a patient who's going to be having achalasia cardia. And why the patient is going to be having achalasia cardia is because there is a selective loss of inhibitory neurons. Why are we having a selective loss of inhibitory neurons? Is because there is a loss of neurons which are responsible for secretion of nitric oxide in VIP, and that is what is going to be seen as a feature of this one, right? So that's what is known to most of us. Bird beak appearance. When we are talking about achalasia cardia, why should we be talking about it? Because this is a patient who's going to be at high risk for development of a cancer. Patients particularly are going to be at high risk for development of squamous cell carcinoma, right? Squamous cell carcinoma, particularly in the lower one third. If I'm talking about something like GRD is the one which is going to be contributing to adenocarcinoma. So nothing else that I need to add on over here because that is then going to be an example of easy question. Which condition is going to be having this finding, by the way? Fibrotic thickening of the alias. Fibrotic thickening of the alias can be seen as a feature of which condition? You have heard of a syndrome that is going to be given the name of Crest syndrome, no? Esophageal sphincter की बात हो रही है यार. CHPS तो प्रद्युम्न कहाँ पे होता है? वो तो हमारा वो होता है ना हमारा इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस. यहाँ पे हम बात करें स्क्लेरोडर्मा की. Fibrosis of the esophageal sphincter is going to be seen as a feature of scleroderma, crest syndrome. ठीक है, ये जो हमारे आप फाइंडिंग बोल रहे थे वो हमारी फाइंडिंग होती है इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की. ठीक है, वो जो जिसकी आप बात कर रहे थे. ठीक है, जिसके अंदर आप कौन सी सर्जरी करते थे? रैमस्टर्ड्स पाइलोरोमायोटोमी. ठीक, इसोफेगस नहीं यार, इसोफेगस गैस्ट्रिक IHPS. ठीक, talking about this one then. 34-year-old male presenting with chronic diarrhea, bloating and weight loss. Biopsy shows you small intestine, blunting of villi, crypt hyperplasia, intraepithelial lymphocytes. इसमें आप चैंपियन है, इसमें आप PhD कर चुके हैं. This is celiac disease, HLA DQ2 DQ8, gluten containing foods like wheat, barley, rye, oat, dietary substitution by maize, rice and quinoa. Diagnosis made with the help of duodenal biopsy. Having the presence of surrogate markers like anti-TTG antibody, anti-mycel antibody. Patient is going to be having high risk for development of skin complication, dermatitis herpetiformis, and the development of GI lymphoma. समाप्त हो चुका है, इसके बारे में और कुछ करना नहीं है. मत समय इन्वेस्ट करना है इस पे, ये हमें आता है ऑलरेडी. उसके बाद आगे हमारा ये वाला 50-year-old man presenting with severe headache, cognitive decline, seizures, MRI shows you presence of a butterfly appearance, lesion crossing the corpus callosum. तो आपको डायग्नोसिस बन गया ग्लायोब्लास्टोमा. जब भी हम ग्लायोब्लास्टोमा की बात करते हैं उसका फीचर होता है pseudopolycystic necrosis, endothelial cell proliferation. Endothelial cell proliferation is going to be associated with the word. The patients are going to be having the presence of a glomeruloid body, and the patients are going to be having a serpentine necrosis in which you are going to be having the tumor cells arranging themselves in the periphery. That is given the name of a pseudopolycystic pattern. True palisading is going to be seen as a feature of a patient suffering from schwannoma. If I'm going to be talking about option B over here, this is going to be seen as a finding of, फटाफट revise करा दो. Option B is going to be a finding of a patient who's going to be suffering from spindle cell formation and samoma bodies. That is going to be seen as a finding of meningioma. Progesterone receptor benign tumor, that is going to be seen in case of adults. Option C is a finding of
ऑप्शन सी रोजनथाल फाइबर्स, रोजनथाल फाइबर्स, छोटा बच्चा रोज दे दिया खुश हो गया, इजोनोफिलिक ग्रैनुल बॉडीज, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, जुवेनाइल पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा हैविंग BRAF mutation, that is what we discussed yesterday as well. Friedrich appearance, perinuclear halo, feature of oligodendroglioma, coordination 1p19p, we are going to be having presence of IDH mutation, frontal lobe calcification. ठीक है, आगे बढ़ जाओ। 42-year-old male with slow growing frontal lobe yellow। आगे क्वेश्चन, फ्राइडे का अपीयरेंस, पेरिन्यूक्लियर हेलो, क्वेश्चन लीक हो चुका है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया। दिस पेशेंट इज गोइंग टू बी हैविंग द प्रेजेंस ऑफ 1p19 की कोरिलेशन। VHL का एसोसिएशन कौन से ब्रेन ट्यूमर के साथ है? VHL इन विच ब्रेन ट्यूमर? VHL is associated with which type of a brain tumor? Cerebellar hemangioblastoma. IDH is what is going to be associated with patients who are going to be having glioblastoma. Glioblastoma. IDH is with glioblastoma, right? That's what you need to remember. Talking about this one, then 43-year-old male presenting with painless progressive vision loss in one eye following a traumatic injury weeks later। ये तो आपको समझ में आ गया, sympathetic ophthalmitis है। This is going to be sympathetic ophthalmitis. Why that takes place is because immune cells get exposed to the hidden antigens. And why immune cells are going to be exposed to the hidden antigens is because there is going to be a breakdown of the immune privilege site. So breakdown of the immune privilege site, exposure of sequestered antigens, that is causing an injury at the level of the opposite eye as well. ज्यादा क्वेश्चन हो गए ऑटो इम्यून के मैकेनिज्म पे, राइट? अब तो बता दो, ये किसने पूछा था मुझसे डाउट, एपीएस वाला और आईपेक्स वाला? मनीषा ने पूछा था, किसने पूछा था, बता दो इसका आंसर। डिफेक्टिव टी रेगुलेटरी सेल्स, कौन सी बीमारी होगी? आईपेक्स सिंड्रोम होगा, आईपेक्स सिंड्रोम। इम्यून डिसफंक्शन होगा, पॉलीएंडोक्राइनोपैथी होगी, एक्सटिंक्ट रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्सटिंक्ट डिसऑर्डर है, ठीक है? ये वाली चीज हमें ध्यान रखना। ये वाले कौन सी बीमारी के अंदर होता है? सेल्फ रिएक्टिव बी सेल्स which can be responsible for defective apoptosis. सेल्फ रिएक्टिव बी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज। ठीक है मुस्कान, इसका आंसर बता देगी। सेल्फ रिएक्टिव बी सेल्स ऑटो एंटीबॉडीज बनाती हैं, और ऑटो एंटीबॉडीज जब हम बात करते हैं, वाइल्ड वाला है यार, अनम्यूटेटेड है। तो ग्लायोब्लास्टोमा वाला अगर वीडियो आपने देखा है तो उसमें मैं डिस्कशन किया था ना, वाइल्ड टाइप और म्यूटेटेड टाइप के अंदर डिफरेंस होता है। तो इसके अंदर ऑटो एंटीबॉडी बन जाएंगी। तो जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे क्लासिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें, जिसके अंदर हमने देखा एंटी स्मिथ एंटीबॉडी और एंटी डबल डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडी, SLE, उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हमने बात करी सेल्फ एक्टिव बी सेल्स की, दे आर इंपॉर्टेंट इन द पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस आल्सो, व्हिच इज द एंटीबॉडी इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, व्हिच इज द एंटीबॉडी दैट इज इन्वॉल्वड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो और बता दो। एंटीबॉडी इन्वॉल्वड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंटी सीसीपी एंटीबॉडी। फिर हमने बात करी एंटी टोपोइसोमरेज एंटीबॉडी, वो किसमें होती है? एंटी टोपोइसोमरेज एंटीबॉडी किसमें होती है? टोपोइसोमरेज इन केस ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस और डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा, राइट? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, शाबाश शाबाश शाबाश, प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पी एंका एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, पी एंका एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेस्ट सिंड्रोम, व्हिच एंटीबॉडी? क्रेस्ट सिंड्रोम, क्रेस्ट सिंड्रोम, एंटी सेंट्रोमेरिक एंटीबॉडी। जब हमने बात करी मायोसाइटिस की, मायोसाइटिस, एंटी जोवन एंटीबॉडी व्हिच इज हैविंग द नेम ऑफ हिस्टिडाइल टीआरएनए सिंथेटेज 1, एंटी हिस्टिडाइल टीआरएनए सिंथेटेज 1, राइट? तो ये हमें याद होगी सारी, तुम चैंपियन बन गए। रिपीट क्वेश्चन है आईएनआई का, इस वाले एग्जाम का। ऑल ब्लड प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, प्लेटलेट सेपरेट हो जाती हैं, आरबीसी हो जाता है, क्रायो हो जाता है, सीरम एल्बुमिन सेपरेट नहीं होता विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सो दैट्स अ सिंपल थिंग। प्लेटलेट्स का स्टोरेज टेम्परेचर, प्लेटलेट्स का स्टोरेज टेम्परेचर 20 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस। विद एजिटेशन प्लेटलेट्स की लाइफ 5 डेज, विदाउट एजिटेशन 1 डे। आरबीसीज का स्टोरेज टेम्परेचर 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, शेल्फ लाइफ होती है 42 डेज। क्रायोप्रेसिपिटेट का -18 डिग्री सेल्सियस, शेल्फ लाइफ होती है 1 ईयर। Which of them is going to be having maximum chances of development of transmission of infections? इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा किसके साथ में होते हैं? दैट इज गोइंग टू बी विद प्लेटलेट्स। ठीक। 65-year-old male with severe thrombocytopenia, platelet count is 8,000। 8,000 कुछ ज्यादा ही कम हो गया यार, इसमें तो जान निकल जाएगी मेरी इसकी। खैर, mucosal bleed is admitted for urgent platelet transfusion, physician orders platelets from a single donor using apheresis। The question is then talking about compared to RDPs, compared to random donor platelets, what is the advantage of using SDPs? SDP होती है सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, RDP होती है रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। क्या एडवांटेज होगा? क्या एडवांटेज होगा अगर आप बात करोगे एक एक करके? सो व्हेनेवर वी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट हायर प्लेटलेट यील्ड पर यूनिट, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, ऐसा नहीं होता। जब भी आप प्लेटलेट्स हो गए तो फिक्स अमाउंट लोगे और इतनी प्लेटलेट्स लेते हो, दैट 1 यूनिट इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग द प्लेटलेट काउंट बाय ऑलमोस्ट लाइक 10,000, राइट?
Whenever we are talking about the risk of decreased bacterial contamination, ऐसा भी नहीं होगा. Platelets का storage temperature is around 20 से लेकर 24 degrees Celsius. So this is what is going to be associated with almost an equal risk of transmission of infections. Even this cannot be the answer. Right? Lower incidence or development of transfusion associated graft versus host disease. ये नहीं होता because the TAGVD is associated with the presence of immunocompetent T cells, not platelets. That is with immunocompetent T cells, not platelets. So if you are going to be taking platelets from a single donor, you are having foreign antigens coming from one donor. If I'm taking donor platelets from different donors, then there is multiple antigens which are entering inside the body. So the risk of allo immunization is going to be higher. So single का advantage क्या होता है? Reducing the risk of allo immunization against HLA antigens. Single donor platelets are you are giving the platelets from one donor. That means you are going to be exposing the body of the recipient against only one type of foreign antigens. So risk of allo immunization is going to be relatively lesser. That's what we need to remember over here. ठीक. Talking about then the next one, which is obviously going to be far easy for you. 55-year-old male presents with multiple liver lesions, peritoneal deposits. No primary is known. That means it's a case of CUP. Then what is the liver biopsy showing you? It shows you adenocarcinoma. That can be a potential question. Majority of the CUPs are adenocarcinoma. It shows positivity for CK7 and CK20. CK7 positivity. It shows CK20 negativity. Immunohistochemistry is negative for TTF1, CDX2, and PSA. Based upon this kind of a cytokeratin profile, what is going to be the likely diagnosis in this patient? नहीं, इस क्वेश्चन में जान के उसने दे दिया ना. अगर हम देखो इसमें सिंपल सी बात करते हैं, अगर ये प्रेजेंट होता कि पेशेंट इज गोइंग टू बी हैविंग CK7 नेगेटिव और 20 पॉजिटिव, देन यू वुड हैव गॉन फॉर द आंसर एज कोलोरेक्टल कार्सिनोमा. ये तो आंसर नहीं है. ये तो आंसर नहीं है आपका. राइट? कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के अंदर 20 पॉजिटिव होता है, 7 नेगेटिव होता है. इफ यू आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, बोथ ऑफ देम वुड हैव बीन पॉजिटिव. पाउच वाला था, तो ये वाला भी हमने रूल आउट कर लिया. दिस इज द वन दैट वी आर गोइंग टू बी रूलिंग आउट. व्हाट वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज, अगर हम लंग एडिनोकार्सिनोमा की बात करते हैं तो 99% तो वी आर एक्सपेक्टिंग TTF पॉजिटिविटी. बट अगर हम TTF नेगेटिव वाले वेरिएंट की बात करते हैं, TTF नेगेटिव वेरिएंट की बात करते हैं, then it is going to be showing you this kind of a profile: 7 positive, 20 negative. That's why you calling it by the name of carcinoma of unknown primary. ये उतना सरल नहीं था जितना आपको लगा. TTF नेगेटिव एडिनोकार्सिनोमा के अंदर 7 is positive, 20 is negative. ये क्वेश्चन था based upon the table which I showed you. The table which I showed you. तो अगर आपने TTF नेगेटिव सोच के आपने इसको भी रूल आउट कर दिया तो आपने स्टमक कैंसर आंसर मार्क कर देगा. स्टमक कैंसर इज नॉट द आंसर ओवर हियर. ठीक है, ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है. तो TTF नेगेटिव ट्यूमर्स के लिए ये वाले प्रोफाइल फीचर करेगा. हालांकि अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, ये भी बता रहा हूं साथ में. ठीक है, जैसे वो मीम बना था ना, घबराना नहीं है आपने. इस क्वेश्चन के लिए कम से कम घबराना नहीं है. ठीक है, आपको ये जरूर बताना चाहिए कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को आपने रूल आउट कैसे किया. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. स्टमक वाले कैंसर के अंदर तो आप देखते नहीं. स्टमक वाले कैंसर के अंदर तो फिर से सेम चीज होती है. उसमें ज्यादातर तो आप CUP का रोल यूज नहीं करते, या फिर स्टमक वाले कैंसर के अंदर आपको देखना पड़ता है दैट देयर इज गोइंग टू बी बोथ ऑफ देम आर लाइकली टू बी पॉजिटिव. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का. जितने लोग ये मेंशन कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा था. बाकी कर दिए तुमने सारे ठीक. ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ले लेंगे ब्रेक. ब्रेक का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फिश टेक्निक. यार बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन को दे दिए. When we are talking about probes with fluorescent dyes, that is going to be used in case of metaphase spread or interphase nuclei. This is going to be absolutely true. Analysis can be performed on cells from chronic villus biopsy or umbilical cord blood. Even this is going to be true. What is the advantage of fish? The major advantage of fish is that we do not require mandatory cells. ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है यार किसी टेस्ट के अंदर. हमारे किसी ही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के अंदर ये वाला डिस्कशन हमने किया हुआ है. राइट? सो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमें फिश करने के लिए. वी डू नॉट रिक्वायर, we are not going to be requiring the rapidly dividing cells over here. And of course fish is going to be useful because we have to see for the presence of the translocations over here. We can be looking at the presence of aneuploidy, and we can be looking at the presence of subtle microdeletions. So this is a very very major advantage of fish that we need to remember, based upon which the question was asked in the exam. So question आया था आपके एग्जाम के अंदर, aneuploidy के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो. aneuploidy के लिए आप कर सकते हो in situ hybridization, and what you can be doing over here is going to be the standard karyotyping. Standard cytogenetics. ऐसे करके आया था ना, कैरियोटाइपिंग वाली स्टडी जो थी हमारी. That is what can be done so far as aneuploidy detection is concerned.
ठीक है, बाकी तो फिर ट्रांसलोकेशन आपको पता ही है, जहाँ पे हम फेस करते हैं 922, 822, 814, 1114, 1122, राइट। 1122 किसमें होती है तो मैंने बोली भी लास्ट में, ऐसा ना हो कि तुम साथ में हाँ 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 करे जा रहे हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, फिर भूल जाओ बाद में। शाबाश, 1122 इज एविंग सार्कोमा, एविंग सार्कोमा। हाँ कर सकते हो, सटल में भी कर सकते हो यार। सटल वाली में तब करते हो बिकॉज उसके अंदर स्टैंडर्ड कैरियोटाइपिंग फेल हो जाती है। स्टैंडर्ड कैरियोटाइपिंग का मतलब है अगर 46 क्रोमोसोम है तो 47 हो गए, 45 हो गए तो डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें सटल माइक्रो डिलीशन है तो सिर्फ और सिर्फ फिश काम करेगी, सिर्फ फिश काम करती है इसके अंदर, और ट्रांसलोकेशन के लिए तो है ही वो। ये वाला एक आसान क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे। 26-year-old वुमन प्रेजेंटिंग विद पेनलेस मोबाइल फर्म ब्रेस्ट मास मेजरिंग 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, कोर बायोप्सी shows you stromal and epithelial proliferation without ATP or mitotic activity. Patient is reassured that the lesion is benign. However, she is concerned about the possibility of malignancy. Stromal proliferation है, that means it is an example of a tumor which is going to be an epithelial tumor or a connective tissue tumor. So हम दो क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे, दो क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ, दो ट्यूमर्स की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं, फाइब्रोडेनोमा एंड फिलोड्स ट्यूमर। What you need to remember over here is which of the following is going to suggest, which of the following is going to suggest malignant transformation in case of the breast tumor over here. So what I'm going to be talking about over here is if there is going to be development of stromal fibrosis and calcification and collagen deposition. This is what is going to be seen as a feature of sclerosing adenosis. Fibrocystic change आपने पढ़ा है सर्जरी के अंदर, वहां पे आपने टर्म सुना है sclerosing adenosis. Sclerosing adenosis. Whenever we're going to be talking about increased glandular density with apocrine metaplasia. Apocrine metaplasia again is an example of a fibrocystic change. This is also an example of a fibrocystic change. Whenever we are going to be talking about the presence of lobular expansion with disc cohesive cells and loss of E-cadherin, disc cohesive cells and loss of E-cadherin, ये तो ऑलरेडी फीचर होता है lobular carcinoma in situ का, lobular carcinoma in situ का या फिर lobular cancer का। So the only one that you need to remember is leaf like growth हो गई और उसमें mitotic activity increase है, जो high grade phyllodes होता है। अगर high grade phyllodes होगा then it is going to be having a chances of progression of a malignant transformation. So phyllodes normally is benign, but some subtypes of phyllodes, जैसे हमने mutations उसमें डिस्कस करी थी HOX1B, HOXB1, that is going to be having a chance of having a progression into a malignancy. बी का बता तो दिया, बी तो ऑलरेडी कैंसर होता है भाई, बी तो ऑलरेडी कैंसर होता है यार। हमने फिलोड्स के आंसर पे क्यों आए, बिकॉज स्ट्रोमल प्रोलिफरेशन और एपिथेलियल प्रोलिफरेशन है, तो हमने रूल आउट करते रहे। तो हमने स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस और फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस को रूल आउट कर लिया। फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस के अंदर एपोक्राइन मेटाप्लाजिया रूल आउट हो गया, स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस रूल आउट हो गया। ऑप्शन बी जो है वो ऑलरेडी कैंसर है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेशेंट के अंदर कौन सा चेंज हो गया जिससे पता चलेगा बिनाइन ट्यूमर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू malignancy. So fibroadenoma is not going to get converted into malignancy. Phyllodes tumor is benign. It is having a leaf-like growth. But if there is an increase in the mitotic activity in a phyllodes tumor, then that is suggestive of the fact that there is going to be a malignant transformation. This is what he is asking in the question. This is what he is asking in the question. ठीक है, that is what you need to remember. चलो सर, बाबू भाई बोल रहे हैं चलो सर चाय पी लेते हैं, तुम तो पिलाओगे नहीं कम वक्त, तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। लेट अस हैव अ 15 मिनट ब्रेक है, 10 to 15 मिनट, मिनिमम 10 मैक्सिमम 15, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। नहीं ब्रेक चाहिए भाई प्लीज, गले को छलनी छलनी थोड़ी ना कर देंगे इस चक्कर में, ऐसी बातें कर रहे हो। 10 से 15 मिनट ठीक है, उसके बाद आगे जल्दी से खत्म कर देंगे। दिस इज लाइकली टू बी फिनिशिंग अर्ली, राइट। 25 क्वेश्चन रह गए हैं सिर्फ यार। सी
बेबी इसमें रखी क्या छोटी हो तो तो अरे जो बर्बाद हो चुका है वो